क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं हेल्थ फाउंडेशन लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का बहुत बढ़िया काम कर रहा है और 2 दशक से ज़्यादा समय से सक्रिय है। आज का आयोजन WHO के वॉक द टॉक को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद आम लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है और ये बताना है कि सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कितने ज़रूरी हैं, दौड़ना और वॉक करना कितना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का आयोजन हिल फाउंडेशन हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के सहयोग से कर रहा है। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट डॉक्टर सुनीता गोदारा का ट्रस्ट है। सुनीता जी फॉर्मर इंडियन मैराथन रनर हैं और एशियन मैराथन चैंपियन रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुनीता जी को ज़्यादा परिचय का सुनीता जी मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। इस शो को वियाट्रिस और इंडियन हेल्थ लिंक सहित 2 दर्जन दूसरे पार्टनर ने सपोर्ट किया है। आपको एक और बात बता दूं कि इंडियन हेल्थ लिंक ने एक ऐसा हेल्थ कियोस्क तैयार किया है जिससे 5 मिनट में आप 20 से ज़्यादा टेस्ट करा सकते हैं। उसमें ECG है और भी कई तरह के टेस्ट हैं। वो यहाँ पे हिल फाउंडेशन की तरफ से 2 कियोस्क लगे हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग वहाँ टेस्ट कराएं और ये कियोस्क 12 बजे तक यहाँ रहेंगे। आप सब टेस्ट करा सकते हैं और 5 मिनट में, जैसे आप ATM से पैसे निकालते हैं वैसे 5 मिनट में आप अपने सेहत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। हिल फाउंडेशन एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू ने किया है और हर सप्ताह संडे को सुबह 8 से 11 बजे तक सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है Health4All, सबके लिए स्वास्थ्य। और ये Zoom पर और YouTube पर, Facebook पर बिल्कुल लाइव चलता है। दुनिया भर में लाइव देखा जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि लाखों दर्शक इससे जुड़ चुके हैं और कि व्यूअरशिप लाखों तक पहुंच गए हैं। हम इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में देश के जाने माने डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, वेलनेस एक्सपर्ट और दूसरे तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और दर्शकों से रूबरू कराते हैं। दर्शकों के मन में जितने सवाल होते हैं उनके जवाब वो देते हैं। हम अपने कार्यक्रम में योगासन का डेमो भी देते हैं। योगा एक्सपर्ट आते हैं और वो 45 मिनट तक डेमो देते हैं अलग अलग। उदाहरण के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए और किस तरह के एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, वो बताते हैं। और बताते ही नहीं है, लाइव डेमो करके दिखाते हैं। एक डायबिटिक को क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए, इस तरह के तमाम चीजें हम बताते हैं और लोगों को इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग के बारे में बताते हैं। जो देश के जाने माने डाइटिशियन हमारे शो में आते हैं और वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं होते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, लखनऊ, देश के तमाम शहरों के डॉक्टर को हम इनवाइट करते हैं ऑनलाइन और वो हर संडे 8 से 11 बजे तक हमारे लाइव शो में रहते हैं और सेहत संबंधित जानकारियां हमें देते हैं और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो कार्यक्रम डॉक्टरों से संबंधित है कि जिसमें डॉक्टर अपने विचार रखेंगे और हमें बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए और दौड़ने से, वॉक करने से क्या फायदे हैं, क्या नहीं है। आजकल आप सुबह किसी पार्क में चले जाएं तो दौड़ने वाले और वॉक करने वालों की बहुत भीड़ होती है, लेकिन आप अगर उनसे बात करें तो पता चलेगा उनमें से ज़्यादातर BP या डायबिटीज़ के मरीज हैं, इसीलिए वॉक करते हैं। जब तक डायबिटीज़ नहीं होता या कोई और परेशानी नहीं होती तब तक वो वॉक नहीं करते हैं। उनमें से मैं भी हूँ। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं भी नहीं करता और 40 से पहले जब लोग स्वस्थ रहते हैं पूरी तरह से तो वो ध्यान नहीं देते हैं, वो इस मोड में रहते हैं, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। लेकिन हमारे बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर जिंगन, जो डायबिटीज़ के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
आप इससे पहले कि आपका शरीर आपको वार्निंग दे, मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप ये शुरू करिए। और मैंने शुरू किया और तब से निरंतर जारी है। तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे लाइव जुम्बा से। लाइव जुम्बा का डेमो होगा, वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जुम्बा लाइव डेमो कराएंगे डॉक्टर सुनीता गुजारा। From she rise, but put it on for good and make she shake off she ties. Smile upon her face, me know she pleased with the tongue there. When I'm there, when I'm there. Make sure that you pop up your body. Oh, you're full of matter, you can keep up with the energy. Like a every night, I make it edit like your memory. Leave and bubble up in music like a melody. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? Every morning, every evening, I just scream straight back to sunrise. Just get in a the position and must one. Never you forget this is your mission. Me take a girl on you and must one. Take a sip and lose the inhibition. When you're the baby, just start my ignition. See you swinging it and it's a my ambition. Me give you the little love, make you turn and listen. Me give you the stick, make you balance and grip on. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. Stay down there, girl. Stay down there. My time, you mind. Let them know that nobody can stop me shine. Carry me and tell them I'm clean up my mind. Tell us make them know that you are one of a kind. पोडियम पे भी रखना दोनों इधर ये कैमरे। नखरे पे नखरा बाजू अभी तुम लगे बजा देन तक दिए कूद कूद के होवेगी बड़ी सजापन मिला ले अखियां साथों लगियां नीक मारी सुट के उड़ दिया चकियां आख दे सच किसे नाल कट ते सानू कणी कणी ना पाउंदी बुलारा नचदी दा सोड़िए नच तेरा तुझे खाता एक पासे काला बनाना लगते तेरे मेल बजाना नचदी दा सोड़िए लग तेरा तुझे खाता कर सकवावे टूटना जावे लग तेरा नचदा पहुंच नहीं मचदा समझ में नचना तुम मच कर बन जावे तू उड़ चढ़ोंदी बुला
choreographed by Khushi Agrawal, my Zumba instructor, specially for doctors, and all must watch that. सुनीता गोदारा जी और उनकी टीम के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए आप लोग। अनोखा कंसेप्ट है। थैंक यू सुनीता जी एंड टीम। 2 in 1 है, एंटरटेनमेंट भी, एक्सरसाइज भी। अब डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है। डॉक्टर साहब कल से सुबह रोज करना है, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। आपने वीडियो भी बना लिया है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूं, आपको सेल्फ डिफेंस का एक डेमो आप एंजॉय करेंगे। ये भी सुनीता गोदारा जी की टीम की मेहनत का फल है। तो देखिए मैम, सेल्फ डिफेंस की टीम का डेमो।
जी, आप समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हमारी बेटियों को कमज़ोर समझने वाले सावधान हो जाएं। सेल्फ डिफेंस के लिए वो तैयार हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हील फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव को। डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव 25 साल से ज़्यादा समय से हेल्थ केयर सेक्टर में सक्रिय हैं और हेल्थ कम्युनिकेशन में उनसे बड़ा नाम आज भारत में शायद ही कोई है लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का। स्वदीप श्रीवास्तव की एक खासियत ये है कि वे आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी जागरूक करते हैं। तो स्वदीप जी आइए और वेलकम एड्रेस दीजिए। Thank you, Kishore ji. Thank you, Dr. Sunita Godhara and her Health and Health Fitness Trust for such beautiful setting up such a beautiful program today. अभी हमने डेमो देखा Zumba का done by these girls, young girls, and it was a beautiful representation of also giving a lot of respect to the doctors and the medical fraternity, particularly for their role they played in this time of COVID, and that was wonderful. और दूसरा अभी हमने लाइव सेल्फ डिफेंस देखा, डिस्प्ले देखा फ्रॉम सोनू ऑन taekwondo for the self defense of the girls. मैं बस यही बोलना चाहूँगा ऑन लाइटर नोट कि हर बार बेचारे बंदे ही पिटते हैं। सो एक सुनीता जी के माध्यम से सोनू से रिक्वेस्ट है कि आजकल इतने न्यूज़ आते हैं कि हस्बैंड भी पिट रहा है, कई बंदे भी पिट रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस डेमो तैयार करें ताकि हमें भी उसका फ़ायदा हो। सो टू स्टार्ट द प्रोग्राम फॉर्मली, आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट वेलकम एड्रेस on behalf of Heal Foundation and our partners India Health Link, Viatris, Mylan Pharma, and lot of other hospitals like Metro Hospital, which has also been very kind to put up their ambulance here for any emergency, and other hospital partners and other healthcare partners who have been very supportive in putting this program. Ladies and gentlemen, welcome to our live show Get Moving for Health to celebrate WHO's Walk the Talk. This live show aims to create health awareness amongst the masses about the importance of physical activity to stay healthy and the importance of walking, running and jogging to stay healthy. This live show has been organized by Heal Foundation in association with Health Fitness Trust run by Dr. Sunita Godhara ji, who is former Indian marathon runner of international repute and Asian marathon champion. This show is supported by Viatris and India Health Link along with over 24 other partners. This is the first live show of Health4All online show. Health4All online show, the first of its kind weekly health show, which is scheduled for every Sunday from 8 a.m. to 11 a.m. has completed its wonderful 31 episodes in more than 6 months, wherein public health experts, specialist doctors from across the spectrum have participated and educated the masses about different aspects of health and wellness. This show is live on Facebook and YouTube. Our Facebook channel where it is live is called Heal Foundation India. Our YouTube channel is very popular channel called Heal Foundation, and we receive many health queries from the audience about health every Sunday, and lots of appreciation for the informative nature of the show. It aims to bring to people online training, counseling on yoga, mental health and nutrition as one stop and in one go, sitting at their homes on Sundays. The idea of this weekly health show is to bring wellness through awareness and make it reach every nook and corner of the country. It is a national health show designed both in English and Hindi to benefit maximum people. The popularity of the show speaks volumes as it has reached over 1.5 million views through different channels of digital media and has been successful in educating the people and inculcating healthy habits in almost every section of the society. Our main anchors of the show, host of the show, are Mr. R. Shankar, President of Heal Foundation, who is unfortunately not here today, but he is traveling, so he could not join. And then Mr. Kishore Malvi, who is also hosting this show today for us. They jointly do this show beautifully. We have got more than
about 200 doctors, experts, public health experts, led by people like Dr. Chandrakant S. Pandav, and nutrition, wellness experts, medical experts from almost every field who have come on our show from time to time. Moreover, today's live show aims to create awareness about the importance of physical activities in staying healthy and inculcating the habit of walking, jogging and running among people to keep the physical and mental ailments at bay. So I would again request you, all of you, we have got a wonderful machine which is basically originated in US, in America, and after 6-7 years of R&D has been brought in India by India Health Link. IHL is called Health4All. It's like an health ATM which does about 20-25 vitals just through sensors. By sitting on that ATM, you can measure your 25 vitals, and you get the report instantly in 3 to 5 minutes. And you also open your digital account and become a part of the digital wellness program of IHL Care, and so that you get alerts from nutritionists, from wellness experts, and you are guided and you are coached to remain healthy through this program. So I would request, we have this mobile van as well as still kiosk till 12 o'clock. You all should definitely go and try, get your test done in 3 to 5 minutes, get your report, open your digital account and benefit from it. और अब है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का क्या मंत्र होना चाहिए, वो देश के जाने माने डॉक्टर हमें बताएंगे कि जीवन में दौड़ना, चलना, वॉक करना, नाचना, कूदना, खेलना कितना ज़रूरी है। बाकी चीज़ों के अलावा खाने की तरह दवा खाने से बेहतर है कि हम ये करें, तो शायद हमें वो ना करना पड़े। तो हम शुरुआत करते हैं देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव जी का, जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड रहे हैं। डॉक्टर पांडव एक बड़े नाम हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वचन दें और कुछ हेल्थ टिप्स हमें बताएं। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। भारत माता की वंदे, जय जवान, जय विज्ञान, लेकिन सबका एक ही भगवान। Swadeep equal to innovation equal to Hill Foundation. He has created a revolution. I represent the iodine, I'm called the iodine man of India. Iodine deficiency is important for your physical and mental health. Journey of 1,000 miles starts with the first step. But Swadeep and Sunita, आपने first step में 1,000 miles cover किए, तालियां बजाइए। First step they have covered 1,000 miles. But once come near. Ready for the song? I want to show it. Please stand behind. Can you put the song on from तेरे लिए? गरिमा, put the song on तेरे लिए. मगर जलती रहे और डॉक्टर पांडव की फुर्ती देखकर जवान लोगों को भी जलन होगी। थैंक यू डॉक्टर पांडव, आपके शब्द हम सबके लिए मंत्र की तरह हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं मंच पर एक ऐसे डॉक्टर को जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। दिल्ली के ये डॉक्टर जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, और एक बार नहीं 3 बार आया है और चौथे बार की तैयारी है। इन्होंने डायबिटीज पर इतने रिसर्च किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये
गिनीज बुक में और किसी का नाम किसी के लिए जगह छोड़ेंगे ही नहीं। धीरे धीरे इनके नाम इतने रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. झिंगन। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर ए.के. झिंगन का, जो हमें बताएंगे कि डायबिटीज होने के बाद तो डॉक्टर बहुत कुछ बताते हैं, डायबिटीज होने से पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें हो ही ना ऐसा। आज का जो विषय है अपना हेल्थ के ऊपर, और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुनीता जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी बताया कि देखिए म्यूजिक और एक्सरसाइज दोनों से आप अपने आप को कैसे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं तो आपकी हेल्थ की आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मानसिक तनाव वो इन सब बीमारियों का तो वो खराब हो गया आपका। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं कि क्यों डायबिटीज की बात हुई, लाइफस्टाइल की बीमारी है तो वो क्यों होती है। तो मैं इसके लिए जल्दी उठना चाहिए सर, एक्सरसाइज करनी है ना मॉडर्न लाइफ जिसको कहते हैं, उसके लिए उसको जिम्मेदार मानता हूँ। और वही इस चीजों के लिए सब परेशानियों का है। और वो 7 सिंस जो मॉडर्न लाइफ के हैं उसमें से पहला एस जो है वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जितना होता है आप उसकी वजह से डायबिटीज, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। आज के दिनों में अगर आप देखें तो आजकल एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन मानसिक तनाव माँ बाप को ज्यादा है। ये जो है तनाव से आपको जो है डायबिटीज और भी बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। दूसरा जो ऐसा है वो है अपना स्लीप। अगर आप 7 घंटे नींद ना आए तो उससे आपका सारा सिस्टम बदल जाता है, आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी बॉडी की बदल जाती है, डायबिटीज होने के, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो ऐसा है वो है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मेनली आज दिल्ली में हम देखते हैं एक ट्रैवल बहुत है, वर्किंग प्लेस पे जाना है, बहुत टाइम लगता है और उसके लिए आपके पास अपने पास समय नहीं है और इसीलिए लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो उसके लिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल या जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी है। चौथा एस जो है उसमें एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर जो है ये भी जो है इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दो जो मेन बात के जो आज की नए जमाने की और आज की जिंदगी की, जिसको कहते हैं ना, किसी भी जगह जाएं आप पार्टी में शामिल हैं और अगर आप वहाँ पे धूम्रपान नहीं करते, स्मोकिंग एंड स्पिरिट्स मीन अल्कोहल नहीं लेते, तो आपको लगता है कि ये इस जमाने के लायक नहीं है। तो ये जो 7S हैं यही इस मॉडर्न लाइफ के जो हैं उसकी वजह से हमारी सारी बीमारियां हैं और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसका मेन रीजन ही यही है। और इसीलिए मैं सबसे पहले लोगों से यही कहता हूं कि या तो आप अपनी जीवन शैली बदल लीजिए, अदरवाइज डायबिटीज आपको बदल देगी। अब वक्त है गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर M.L. गुप्ता को बुलाने का। डॉक्टर गुप्ता नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे आग्रह है कि वो उपस्थित लोगों को हेल्थ टिप्स दें। डॉक्टर गुप्ता। Well, I'm Dr. Gupta and I've been in practice for the last about 56 years. I'm at the age of 78 and in my regular routine, I go for 40 minutes of brisk walking even each day, all the time. So I could come out of the crisis situation because of the, good positive thoughts, positive mind and regular exercise and good control over my diet. I'm diabetic for the last about 45 years, but I've been maintaining very well. बस सबसे पहले जो है आपको मैं स्वस्थ का एक मंत्र बताता हूँ। आहार, बैलेंस डाइट, ब्रह्मचर्य या सात्विक जीवन, व्यायाम, प्राणायाम और निद्रा। आपका जो डाइट है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें फैट, साल्ट वगैरह का थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए। जो डाइट जो है लोगों का मैं देखता हूँ कि 5 मेंबर्स की फैमिली, उनके घर में 6 लीटर तो लगभग रिफाइंड आता है, 1 लीटर देसी घी आता है और 1 लीटर सरसों का तेल आता है पकौड़े वगैरह के लिए। तो दैट इज टू हाई ए क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय a family of 5 members.
the best permitted use is 15 milliliter, 3 teaspoon per day. Although that is 15 milliliter, it comes to about 450 milliliter per month per person. तो हमारा जो है वो बहुत जो है लिमिट हम क्रॉस करते हैं। तो डाइट में जो है बैलेंस डाइट में जो है उसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, साल्ट, मिनरल्स और उसमें फाइबर, उचित मात्रा में फाइबर का लेना। फाइबर जो है आपका बल्क, स्टूल का जो बल्क, जितना फाइबर आप ज़्यादा लेते हैं तो स्टूल का बल्क ज़्यादा होता है, और स्टूल का बल्क जब ज़्यादा होता है, आपको मालूम है कि स्टूल का कलर जो है ब्राउनिश होता है। दैट इज फ्रॉम बाइल पिगमेंट्स, एंड बाइल पिगमेंट्स आर partly converted from the cholesterol also. That also reduces your cholesterol level in the body. और आपका जो है दूसरा तरीका जो आपका जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि होलिस्टिक हेल्थ, वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, दैट इज द फिजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड कॉग्निटिव वेलबींग ऑफ ए पर्सन. I convey my grateful thanks to Dr. Jhingan for being the part of this team, and he has given good tips to all of you for conserving your health and preserving your health, and to have fitness in spite of all odds. Blood pressure, diabetes, that could be managed, but you have to discipline yourself. तो होलिस्टिक हेल्थ में जो है ये सभी चीज़ें जो है नितांत हैं, और आपको जो है इसके लिए बहुत जो है 3 चीज़ों का बहुत अपने पालन करना है कि वो जो है एक तो जो है आहार बैलेंस होना चाहिए, पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए, फाइबर अमाउंट ठीक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपका रेगुलर प्राणायाम या एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, ये सब उसके पार्ट होने चाहिए। और निद्रा 7 to 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट। मैं देखता हूँ कि आजकल जो है हमारा जो लाइफस्टाइल जो है इस हद तक विकृत हो गया कि रात को हम काम करते हैं, दिन में सोते हैं। ये भी प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये जो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है उससे भी बहुत सी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता को। आयुर्वेदिक एक वो साइंस है जो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ साइंस है। 5000 साल से भी पुरानी हमारी साइंस है। एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको इसकी ये बताऊं कि इसमें जो औषधियाँ, जो ड्रग्स, जो सबसे जो इंडिकेटेड है आज के 5000 साल पहले जो लिखे गए थे, इतना समय परिवर्तन हो गया, हमारा भी इतना विकास हो गया, समाज में भी बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन जो इंडिकेशंस थे वो औषधियाँ आज भी उतनी ही कारगर हैं बीमारियों में जितनी उस वक्त हुआ करती थी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा विकास हुआ वैसे वैसे वहाँ भी परिवर्तन होता गया। तो ये सोचना कि ये पुरानी है, जस्ट चूरन चटनी है, ऐसा नहीं है। एक बात और आती है, जैसे अभी सर ने बताया कि जो डायबिटीज को लेकर के कि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हम जो देख रहे हैं आज हमारे समाज में बिल्कुल कीड़े की तरह, दीमक की तरह लगा हुआ है। जो दूसरी बीमारियां हैं उनको तो हम मेडिसिन लेके ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से परेशान होते हैं तो हमें यही डॉक्टर कह देते हैं कि ये दवाई लो और सारी जिंदगी आपको खानी पड़ेगी, ये जब तक आप हैं तब तक। मतलब और ये ऐसी बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो छोटे छोटे बच्चों में, यंगस्टर्स में दिखाई दे रही हैं। अब ये हमें देखना होगा कि ऐसा हमने क्या कर लिया जो कि हम सबसे विकसित हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें सबसे डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है और सबसे ज्यादा बीमारियों से परेशान है। किसी जानवर को आप बीमार नहीं देखेंगे, किसी पेड़ पौधे को इतना बीमार नहीं देखेंगे जितना हम परेशान हैं। तो हमने ऐसा क्या किया? विकास तो हमने बहुत किया, खूब साइंस में डेवलपमेंट किया, लेकिन हमने अपनी हेल्थ को दांव पे रख दिया। हमारी जो आयुर्वेदिक साइंस है उसमें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट है। उसका तो उद्देश्य ही जो है, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सबसे पहला काम वो कहता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उसको हेल्दी रखो। बीमार का ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही, जो हेल्दी है उसको हेल्दी रखना है। अब उसको हेल्दी रखने के लिए कैसे वो हेल्दी रहे, उसके लिए हमारी आयुर्वेदिक साइंस में इन्होंने बहुत सारी चीजें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी चीजें इंडिकेट करी हैं।
हम आपसे बहुत ज्यादा, अगर एक एक चीज में बताएंगे, बहुत लंबा, बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी और वो चीजें लाइफ के लिए बताऊंगी जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। और अपनी जो हमारी हेल्थ है, जैसा सर ने बताया, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ होगी तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। ये सोचेंगे हम बहुत विकास कर लेंगे, बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। कैसे करेंगे जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी? तो उस पैसे को, उस पोस्ट को हम कैसे एंजॉय करेंगे जब हम ठीक ही नहीं होंगे? तो उसके लिए जो इन्होंने करा है वो दिनचर्या बताई है। दिनचर्या में हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले लिखा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब लोगों को यही नहीं पता है, इन बच्चों को भी शायद नहीं पता होगा, या जो यंग जनरेशन उसको नहीं पता कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान क्यों हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है? क्योंकि उस वक्त हमें प्रकृति के पंचामृत मिलते हैं जो हमें उसके बाद नहीं मिलेंगे। अब प्रकृति के पंचामृत क्या है? सबसे बड़ी चीज है, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भूमि मिलेगी, शुद्ध आकाश मिलेगा और इसके साथ साथ शुद्ध प्रकाश मिलेगा। आप कभी सुबह उठ करके देखिए कितना शांत वातावरण होता है, कितना पीसफुल होता है, आपका माइंड भी ज्यादा फंक्शन करेगा, ओवरऑल पूरी आपकी जो फिजियोलॉजी सब कुछ बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन हम कब जल्दी उठ सकते हैं? जब हम जल्दी सोएंगे। जब हम छोटे थे हमें किताबों में पढ़ाया जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हमने वहीं तक पढ़ा और वहीं उसको भूल गए, एग्जाम दिया और भूल गए। आगे हमने नहीं सोचा कि हमें इसको फॉलो भी करना है। अगर हम टाइम से सोएंगे तो हम टाइम से उठेंगे, हमारा सिस्टम ठीक से रहेगा। उठने के बाद हमारा मोशन भी ठीक से होगा जब हमारी नींद पूरी होगी। मोशन से आने के बाद फिर हमें क्या करना है? ब्रश करना है। ज्यादातर लोग क्या है, देर से उठते हैं, अब ऑफिस की या स्कूल की जल्दी है, फटाफट ब्रश किया, वो हुए, दांत साफ तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, और बस ड्रेसअप हुए और चल दिए अपने काम के लिए। आप ये देखिए कि ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे जाकर के अपना जो है वो दांत निकलवा रहे हैं। इतनी यंग एज में आप अपने शरीर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को आप निकाल देते हो। आपने सोचा कि आगे जाकर के आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे रहोगे? आप उनसे पूछो, नहीं हम ठंडा नहीं खा सकते, हम गर्म नहीं खा सकते, मेरे दांत में दर्द है। मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बैठ करके, जैसा सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उससे हम पढ़ते हैं, उसमें ऐड में दिखा रहे हैं इसमें वेदा है, इसमें नमक है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। वो हलवे जैसा लेके उससे हम पेस्ट करते हैं, वो भी हम प्रॉपर नहीं करते हैं, और वही हलवे जैसा पेस्ट करने से हमारे दांत भी हलवे जैसे हुए जा रहे हैं। हम नीम का दातून क्यों नहीं कर सकते? आप नीम का दातून लो, अपने मुंह में रखो, उसको चबाओ, उसका जो जूस निकलेगा सबको पता है। ऐसा कोई शख्स यहाँ पे या आपके कांटेक्ट में लोग हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि जिसको ना पता हो कि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारा ओरल हाइजीन पूरा उससे मेंटेन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं टीवी में ये आ रहा है एक ओरल रिंस, उसको लेंगे, उससे हम कर लेंगे, बिना ये सोचे हुए कि उसमें हम कितने सारे केमिकल्स ले रहे हैं। ओरल के साथ साथ एक और बात आती है, जैसा सर ने अभी ये वॉकिंग के लिए कहा, हमें वॉक जरूर करनी है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह को और शाम को आफ्टर डिनर। जहां तक खाने की बात है, जहां तक हो सके हमें घर का होममेड बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। बाहर के खाने में जैसा सर ने बताया कि शुगर और सॉल्ट ज्यादा है, जो बाहर का हम खाना लेते हैं वो लोग उसमें बहुत स्पाइसेस डालते हैं और फिर उस स्पाइस को सबसाइड करने के लिए उसमें शुगर डालते हैं, तो और सॉल्ट डालते हैं। आप देखिए ना, बहुत चटपटा, खट्टा, मीठा, क्या है? एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर हम ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ तो खराब होगी। डिनर के बाद भी हम वॉक नहीं करते, डिनर के बाद हम घर का छोटा मोटा काम करते हैं और ये कहते हैं कि लो जी हो गया, मैं तो घर में ही इतने काम है। होता है क्या, डिनर करते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं, जबकि डिनर हमारे सोने से कम 2 घंटे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि प्लीज आप इन छोटी छोटी टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाइए और यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी यहाँ आपको बताया गया है अपने कॉन्टेक्ट में कम से कम 10 से 20 लोगों को बताइए। हेल्थ की अवेयरनेस अपने आप फैलेगी, लोग अपने आप हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, हेल्दी होंगे। आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा नीमा के डॉक्टर राजेश यादव से कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें। चलिए, जिंदगी में कुछ ऐसा करो काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। देखिए, हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। पहले तो डॉक्टर सुनीता गोदारा जी है, उन्हीं के लिए है कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करती,
बात मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करती। हौसला तो रखती हूँ आसमां छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती। और हमारे बीच में दो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पांडा हैं, डॉक्टर झिंगन हैं। बोला मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम बनाना सीख लो। मरना तो है एक दिन, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। और देखो, ये मेरे बीच में बेटियां बैठी हैं, उनके लिए है कि सिर्फ शोर मत समझ लेना, मुझे कमजोर मत समझ लेना, हाथों में चूड़ियां सही पर मुझे कमजोर मत समझ लेना। बहुत अच्छी बात है। और आप सबके लिए है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा। और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और देखिए किशोर जी कितने सौम्य तरीके से 2 घंटे से प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं। उनके लिए है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। और आप सबके लिए है कि बहुत ही खूबसूरत आप सबके लिए है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमां की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं परवाह गिर जाने। और पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, या आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। और योग ही समाधि है। समाधि मतलब समबुद्धि। देखिए समाधि का मतलब कोई हमें अंतर ध्यान नहीं हो जाना है, कोई मोक्ष नहीं मिल जाता है। समाधि का मतलब है समबुद्धि। जब हम यश अपयश, मान अपमान, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी और अमीरी गरीबी की प्रकाष्ठा से जब ऊपर उठ जाते हैं, ऐसी अवस्था को समाधि कहते हैं। हम में स्मृति की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। हर प्राणी में हमें ईश्वर नजर आने लगता है। बोला समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है। जब हर प्राणी में हमें ईश्वर की मूर्ति नजर आने लगे, वो है समाधि। सभी को मेरा नमस्कार। सब डर गए होंगे, अब तो सुनीता गोदारा आ गई, एशियन मैराथन चैंपियन है, अब तो रन होगा। लेकिन मौसम की का जो तकाजा है वो हम देखते हुए हम कुछ ऐसी चीजें यहाँ करेंगे जिससे कि आप जो अभी 1 घंटे से बैठे हुए हैं तो आप पूरे एक्टिवेटेड हो जाएं। उसके पहले मैं आपको, क्योंकि इन्होंने वो बताया नहीं है, प्रोफाइल छवि के पास है, मैं आपको एक बात बता दूं। मुझे सुदीप जी को मैं वैसे तो पिछले 12 साल से जानती हूँ। एक बार हमने एम्स में WHO का प्रोग्राम किया था, तब डॉक्टर सुदीप की पूरी टीम के साथ में मैंने काम किया था WHO का। और उन्होंने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते पहले बोला है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, जिनेवा में वॉक हो रही है, वॉक फॉर हेल्थ, हमने यहाँ करनी है। जो है उनको वॉक, रन, फिटनेस, योगा और पूरी कंडीशनिंग कराते हैं। हर दिन का प्रोग्राम अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि बॉडी जब आपका एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना वॉक करो, रोज अगर आप वॉक करते हैं, मैंने बहुतों से सुना है अरे हम तो रोज 1 घंटा वॉक करते हैं, हाँ, लेकिन हमारा वेट ही नहीं कम हो रहा है। क्योंकि बॉडी को हमेशा कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट। बॉडी को चेंज चाहिए। बॉडी अगर एक जैसा काम आप करेंगे रोज तो वो स्टेल हो जाती है, फिर वो उस पर असर नहीं होता। वो जो आप चाहते हैं, रनर भी जो परफॉर्मेंस करते हैं, या ताइक्वांडो वाले भी या जुम्बा वाले भी वेरिएशंस लाते हैं अपने प्रोग्राम में। हम भी यहाँ पर आज वेरिएशन लाएंगे, क्योंकि इतनी धूप में वॉक न करने के बजाय हम क्लैपिंग थेरेपी करेंगे, नेचुरल मसाज करेंगे, और आप देखेंगे 5 मिनट के उस सेशन के बाद आपके अंदर जो स्फूर्ति आएगी, जो बॉडी के अंदर की नर्व्स एक्टिवेट होंगी,
वो हम करेंगे। अब मैं एक नया गेम जो हमने शुरू किया है, आपने जुम्बा देख लिया, ताइक्वांडो देख लिया, ये और भी लोग करते हैं, लेकिन एक आयरन बॉल गेम है। ये जो सामने बैठे हैं बच्चे कलरफुल बॉल लेके, इनको मुझे जरूर इंट्रोड्यूस करना है। सब अपनी बॉल ऊपर उठाओ। ये एक आयरन बॉल गेम है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड स्प्रिंटिंग। ये स्कूल से लेके बड़े, आप इसमें देख रहे होंगे सभी एज ग्रुप के हैं। हमारे साथ जो आयरन बॉल दिल्ली एसोसिएशन में आयरन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी हूँ, एडवाइजर भी हूँ। 5 साल पहले ये गेम शुरू हुआ था। 7 कंट्रीज में होता है, अपने यहाँ करीब 17 स्टेट्स में होता है। दिल्ली एसोसिएशन आपके सामने बैठी है। हमारे साथ में गौरव बोर्ड मेंबर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, सुजाता एग्जीक्यूटिव मेंबर है, कृष्णा एग्जीक्यूटिव मेंबर है और नुपुर मिश्रा बोर्ड मेंबर है। हमारे साथ कोच लखनऊ गए हुए हैं। हमारे साथ इंडिया प्लेयर भी हैं। 5 साल पहले ये गेम शुरू हुआ था और हमने यहाँ पर इस साल 21 में शुरू किया है। एक बार आदर्श खड़े हो जाओ। ये इंडिया प्लेयर है और अभी इंटरनेशनल खेल कर आया है। स्नेहा बंसल, ये इंडिया प्लेयर है और इंटरनेशनल खेल के आई है। प्लीज सिट डाउन। और ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनमें से जो नए हैं वो नहीं, जो पुराने एक बार खड़े हो जाओ जिन्होंने नेशनल रिप्रेजेंट किया दिल्ली स्टेट। ये देखिए, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, इस वक्त मैं आपको पेरेंट्स की तरह मुखातिब हो रही हूँ। अगर आपके बच्चे एथलेटिक्स करते हैं, फुटबॉल करते हैं, जहाँ बहुत कंपटीशन है और वहाँ पर इतना ज्यादा, तो कहते हैं ना जब नई शुरुआत होती है तो बड़ी बढ़िया होती है, तो इस नई शुरुआत में शामिल हो। हेलो भैया, हेलो हेलो, मोबाइल, हाँ मोबाइल पीछे करो। हो गया, चलो भाई, बल्ले बल्ले हो जाए। कहाँ तक आ गए? छल कबड्डी, छल कबड्डी, छल कबड्डी, सारे मसाज करने में पसीना आया, थोड़ा थोड़ा आया ना। इसको मैंने तो अभी टाइम की कमी है इसलिए सिर्फ 2 मिनट कराया। इसको अगर 10 मिनट किया और पसीना ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ओके, दूसरी बात आप गूगल कर लेना, सुनीता गोदारा इन लोग ने नहीं बताया। आई एम द वन इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैराथन वन बाय एनी इंडियन। 1996 I went to Atlanta Olympics and I was chosen for the torch-bearing escort runner. 92 I won the gold in Asian Marathon. 96 I won the bronze medal in Asian Marathon. अभी मैं कालका जी में एक स्त्री शक्ति केंद्र चला रही हूँ। हमारी एक सब ब्रांच JNK में चल रही है और हमारी एक ब्रांच आली विलेज में है। इसके अलावा हमारी HFD ताइक्वांडो अकेडमी का आपने परफॉर्मेंस देख लिया, जुम्बा का परफॉर्मेंस देख लिया। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट से जुड़िए और मजे कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। हेल्थ से अगर लिंक होना है, देखिए लिंक वाला है ना, हेल्थ से लिंक होना है तो 1.5 घंटा रोज टहलिए, बीच बीच में स्क्रीनिंग करवाते जाइए और हेल्थ को भूल जाइए। हमेशा हेल्थ दिमाग में रहेगा वो भी अच्छा नहीं होता। तो अब जमाना है हेल्थ को भूलने का। हेल्थ लिंक है, 1.5 घंटा रोज चलिए। और अंत में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अंत में ताली बजा दीजिए।
अच्छा, ऐसा इसलिए कहा मैंने, नई दिल्ली में जब हेल्थ ऑडिटर था तो मेरा एक कॉलम बहुत फेमस हुआ था, रोज ताली बजाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। हमें कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, नो डायबिटीज, नथिंग। 10 साल से ताली बजा रहा हूँ। धन्यवाद। ले आओ ना, एक लाइन में लग रहा दो ले लेना। ओके, बस ठीक है।
Good morning, Namaskar. Welcome back. I am Shankar Raj, President of Heal Foundation, and this show is live on Facebook and YouTube. The earlier session intro video was very silent. It was in a silent era. I regret the technical glitch that happened. It always happens sometimes. So, but however, we could read all those things that were there on the session intro video. Now we move on to a new fortnightly segment called the Health Technotion, which will focus on emerging role of technology in wellness and healthcare. From basics of sugar level and BP measurement using handheld devices, technology has grown leaps and bounds. We now have the ability to measure health parameters without the assistance of paramedics and can predict onset of lifestyle ailments well in advance. And with artificial intelligence and machine learning, the benefits are limitless and the boundaries amazingly keep expanding. In the first episode of Health Technovation on health and wellness, we have with us Mr. Naresh Hasija, the Vice President of Viatris, a global healthcare organization. As a public health specialist, he has held leadership positions and worked with brands like Viatris, Mylan, Biocon, Dr. Reddy's, and MSD. Having an experience of over 20 years in healthcare industry, Mr. Naresh has worked in a variety of domains, including public health, oncology, infectious diseases, gastroenterology, metabolic disorders, immunology, nephrology, family planning, and critical care. Next, we have with us Dr. Akash Rajpal. He is currently serving as Executive Vice President, Marketing and Product Management at Medica Bazaar. Dr. Akash has more than 20 years of rich experience in public and private healthcare sectors. Dr. Akash, with a forte in healthcare operations and IT, has executed various PPP, e-health, accreditation, and operationally challenging initiatives. His achievements include receiving the first NABH accreditation in Western region of India, IMC Ramakrishna Bajaj National Quality Award, and Asia Pacific Quality Award. Next, we have Dr. Satyendra Goyal, the founder and CEO of India Health Link, the world's first consumer-centric health and wellness platform. He has spent 15 years in healthcare ecosystem in various roles, including Chief Science Officer at Colibra, a data intelligence company, medical school faculty at Northwestern University, and as an advisor to several healthcare companies. He has filed more than 10 patents and is a serial entrepreneur with the latest exit in a patient privacy technology startup. Moderating this session will be Dr. Sivakumar, who comes with over 30 years of experience in leadership positions in the core areas of healthcare with specific expertise in clinical diagnostics. He held various apex-level leadership positions in the healthcare, life science, and clinical diagnostic industry, and was responsible for managing and growing business operations of multinational companies like Dade Behring, Siemens, etc., and Indian companies like Ranbaxy, Tron, and Healthcare. Through his initiative, ESI MedTech Solution, he enables various companies and startups in healthcare, life science, and clinical diagnostic sectors to effectively offer their products, services, and solutions through effective go-to-market and business expansion strategies. He works very closely with innovators and startup companies facilitating to introduce their offerings to the market through various business strategies. Over to you, Dr. Siva. You have time till 9:50. Thank you, Mr. Shankar. Really appreciate your introduction. Let us, without wasting time, let us start the session. Good morning to all the participants of the weekly online show Health4All, which is being organized by Heal Health. It's a fantastic initiative, and it spreads the message of having a healthy lifestyle. I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to be the panelist for an important topic
technology and wellness, which is very close to my heart. It gives me an immense pleasure to have Mr. Naresh Asija, Dr. Satyendra Goyal, and Akash Rajpal as panelists. Over the past few decades, technology has changed almost every aspect of our lives, and healthcare is no wellness, which is during today's interaction. Let us get some thoughts on how technology can be part of our happy life. What I would like to do during the next 45-50 minutes of time is the three panelists will be asked few questions on the areas of interest, the areas of interest to the public on health and technology. And then, if there is time, we can invite questions from the audience. As you are all aware, 75% of all healthcare infrastructure, including medical specialists and doctors, are concentrated in the urban area, and where only 27% of the population lives. Whereas 73% of population live in the rural areas with chronic lack of primary healthcare facilities. Technology will clearly be the backbone, and it is imperative that technology and healthcare talk to each other seamlessly. The healthcare industry has evolved immensely over the years, and much of that change has been driven by technology. Technology helps address India's unique challenges in terms of accessibility, affordability, and quality. These are three key important aspects that one needs to remember: accessibility, affordability, and quality. The rate of adoption is rather fast, and given the size of the healthcare sector, the resultant scale and impact can be accessibility. Technologies have been mainly applied in clinical environments such as hospitals and healthcare facilities under managed care by well-trained specialists and individuals. The global challenge of providing quality healthcare at affordable cost through preventive, personalized, and precision medicine requires a seamless use of technology and infrastructure support for patients and healthcare providers. Technology should be effectively used for monitor remotely patients' vital signs in real time, support health services in healthcare centers, allow self-awareness of disease, and improve motivation. So there are several applications of the technology in the betterment of healthcare. So without wasting time, let us hear from our panelists coming from various backgrounds on utilization or adoption of technology for better health and wellness of individuals. Dr. Siva, I'll interrupt you 1 second. Dr. Mr. Naresh Hasija has not been able to join. So you have Dr. Akash and Dr. Satyendra. Yeah. No problem. Can you put the song on? Okay. So let me put the first question to Mr. Dr. Satyendra Goyal. Okay. 1 second, Dr. Hasija. Dr. Goyal, preventive care is the key to healthy future. How can technology help? Maybe cloud-based solutions, integration of point-of-care devices with analytical tools for better prediction. We would like to hear from you on these important aspects. The reason why I have chosen preventive care as the first question is prevention is better than cure. We have been hearing this from our childhood. So that is a very, very key important aspect, and technology would play an important role. Over to Mr. Goyal. Dr. Goyal. Thanks, Dr. Kumar. And first of all, good morning, everyone. And thanks for inviting me onto this panel. It's a very important topic, and I think we can obviously hear from all of the speakers here, as well as share my thoughts, which I have learned so far in my life. To answer to your question, Dr. Kumar, I think you said it right. Prevention is better than cure. But in what we have seen, prevention can come with education awareness. I think what is lacking specifically in Indian environment, that people are not aware of what really is health and wellness. Because health has always been correlated with something called clinical care, clinical assistance. And health and wellness actually starts much before somebody thinks about being sick, or somebody thinks about
that I need to seek clinical advice for that. And technology in that particular manner is very helpful. Already people are getting aware of the value of using small things like wearable devices. There are already a lot of people starting to use blood pressure monitors at home. A lot of people are already having technologies which are providing to them in the senior care, the assisted living facilities. So technology has already intervened into where we call where the people are instead of where the health systems are. Even today, the labs at home, the e-commerce, similar to e-commerce, the e-health initiatives have evolved to a very large level thanks to COVID. Largely that the adoption scaled up to that level, the awareness that the health is very important and people need to avail that health to fight against these unfortunate situations which arise and there is no control at that time. And the main thing which has come up or the spread happened is telemedicine, telehealth. In India, national health digital infrastructure also came at the right time where now government is taking part into saying, let us take one step forward and provide that education and awareness to people so they can think about health insurance, they can think about they need to be healthy. The main thing which has come up to take care of themselves, right? Health is part of that. It's part of daily living. It's as important as anything else. Like we should not avoid that prevention or the health because then when it becomes chronic, it is too late for us. The only thing which is missing right now is the enablement. As you mentioned, 73% of Indian population is still rural. And even in urban areas, most of our healthcare is delivered by small clinics. Small clinics, even though there is a spread of digital technology out there, small clinics have not adopted that because even having the infrastructure given by government or the mandates given by government, there is no facilitation reached out to the roots of Indian healthcare infrastructure. So three things which technology, even though it is there, needs to be adopted. One, education and awareness for every individual. Then health and wellness is not about clinical care. Health and wellness starts much before that. We need to understand that our infrastructure is not about big hospitals. Every single small clinic to an individual doctor, to even the wellness provider like our counselors, our simple healthcare providers in general, even the yoga and the diet, the nutrition counselor, they belong to the same ecosystem, including paramedics. So they all should be enabled with digital technology to become part of the preventive ecosystem. And the third and the foremost, as you mentioned, that we need to bridge the gap of the disregard of socioeconomic status, disregard of demographic status, and start to tackle this problem, adopt the digital era and the digital technology which are available now to us, and take the benefit and spread it across India. Yeah, thank you, Dr. Goyal. Now let me come to Dr. Akash Rajpal. Something related to preventive care. I would like to have his thoughts on the point of care devices. As we are all aware that preventive care is closely linked to periodical monitoring of key parameters, and diagnosis plays a very, very important role. Given the requirement of accessibility, we discussed a couple of minutes ago that huge population lives in the remote areas or in the rural areas, and accessibility is an issue. I would like to understand from you how important are point of care devices, and would like to understand how effectively are they being used currently, both in the government and private sector. Over to Dr. Rajpal. So, thank you for inviting me. Good morning to everyone. I hope I'm loud and clear. Yes, you are. Okay, so I'm basically a public health specialist by qualification. So I think that qualifies me to speak what I'm going to speak. My initial stint in career was working for the government sector before I came into the private corporate sector. Actually,
technology is what? Technology doesn't mean only electronics. Technology is an efficient way of how human processes are used, right? In a certain sense, at a particular time in past, when maths was invented, it was technology because it made counting and all such things easy. Or say inventing a wheel was technology because it helped people move faster from one place to another. So unfortunately, technology is only referred to as a very sophisticated electronic device, but not necessary it should be. Preventive care is very important because especially for a country like India, no matter how many doctors you put or how many nurses you put, it will never be enough. I have worked in the government sector since so long earlier. I saw that the OPDs and even now they are also crowded because even for small minor ailments like fever or cough or cold, those people visit tertiary care centers or they visit brick and mortar centers. Where I personally feel if there is an efficient way to handle that, these people should never go to a hospital. They should never go to a doctor in the first place. They should somehow be diagnosed for their common cold, cough, fever problems at home, where after their initial diagnosis, if that thing is not subsiding through a certain level, only then they should be referred to a physical brick and mortar place. And this I have observed in a country like Israel when I visited there too. And I keep on visiting. I have kept on visiting various countries just to understand how different healthcare processes are there in different countries and how efficiently they manage it. For example, in Israel, they use this app for first level of care. That means if you have any problem, you do a telemedical consultation. If you have a dermatology, skin problem, you just show that on a photograph on an app, and then most of it gets resolved on the app itself. The pharmacy prescriptions are done on the app. And so only if that thing doesn't solve your problem that you go to a hospital. And that is where your doctors and nurses and everybody physically is optimized. And India has been using something like that since a long time. Not when I said technology is not just electronics. For example, our ASHA workers, our ANMs, our ASHA workers, for example, got recognized globally now through the WHO recently. They won the award. That they are the ones who actually play a major role in preventing all these problems. So they go to the houses, they check if somebody has fever, etc. They prescribe these medicines. Anganwadi workers prescribe these medicines, say malaria medicine or whatever, on the field, so that these people don't come to the hospital. Now imagine if that is plugged in with certain apps or certain other remote diagnostic tools, which is given to these workers who are on the field working on behalf of the government, then it will be an exponential change in how Indian healthcare works. And I believe that the digital healthcare initiative, which is started by the government of India, will enhance Ayushman Bharat better, will create privacy-enabled healthcare records. And just like UPI has transitioned financial transactions to the poorest, this is going to transition soon for everyone for how preventive care is done. So bottom line is, governments should soon come out with a policy and enable certain resources physically, which is not necessary technology, but of efficient processes. And obviously technology in terms of electronics or apps or mobile devices, where the first level interaction of any patient for all the non-critical aspects of say symptoms a patient gets, like fever, cold, cough, etc., should be done without even going to a physical place. I think that will solve, and that is where India Health Foundations or Heal Health's Health Pod or some remote monitoring device really comes into play. I saw that Health Pod and I think it's a wonderful device. If that is there and can be there in every nook and corner, where patient can just go and do a self-check and see if those things which they are so worried about that they feel they should go and need to see a doctor, and that machine itself can solve that issue. Or say somebody
on the tele screen on that device can guide them as to how those problems can be sorted, I think the visit to a doctor will reduce drastically, and the doctors then can meaningfully look at something more important cases. Yeah, so I fully agree with you on what you have stated, but I would still insist on asking you the question on how government is looking at these kind of, for example, the health pod that Dr. Goel's team have introduced. Okay, if something like this is introduced in the government of India schemes, how is it looked at? If it is a kind of a question that is sensitive to answer, I would not insist. But I think it's very important that unless government gets into these kinds of things, it would not be very effective for a large population. I beg to differ there. I don't think every responsibility in any country is only of the government. Therefore, there are entrepreneurs, there are NGOs, there is CSR and corporate social responsibility of existing corporations. Why should health be only the responsibility of the government? Health is everyone's responsibility. It is yours and mine too, right? So I personally feel government is very persuasive and positively inclined towards improving healthcare processes, and I can vouch for it because I've seen that happening over a period of time for 2 to 3 decades of my medical career. And recently I saw a clip where Dr. Mansukh Mandaviya was actually using a telehealth device like this, a pod where he was using it, and he was actually impressed. So it's not that they are not positively inclined, but just to say that the government only should be doing this is not right. But if a lot of people, including private entities or NGOs, come forward and start using this, where their employees are also part of that ecosystem as patients, their customers are also part of that ecosystem as their patients, though they may not be in healthcare, they will contribute a lot to reduce the burden on the overall healthcare system. And I feel the time has come, and India has a lot of prowess in providing such efficient methods to diagnose and prevent healthcare problems, that a lot of burden also will go away from the government. And it's a very positive thing. Unless the UPI, for example, was not utilized by likes of Paytm or Google Pay, which are not government, do you think that the financial transactions? No. I think you misunderstood my question. I did not say that government only should do it. Okay, I said that how effectively is the government inclined to encourage that kind of thing? They are absolutely inclined. It is seen through Ayushman Bharat. It is seen through the Digital Health Initiative. They are absolutely inclined. I think we are in the path of a huge revolution in the making. I think the healthcare scenario in India, just wait for 5 years. I think it will be among the most talked about and the most advanced in terms of matching the gap of such a large population when it comes to healthcare. And therefore, when I said that the private entities also should contribute, for example, the company where I work, Medica Bazaar, has revolutionized the way the business to business medical supplies are addressed to enable all this ecosystem. For example, no doctor can provide efficient service till he gets all the medicines or the stethoscopes or the blood pressure monitors to see the patient, or say the government hospitals would not run without efficient timeline supplies of these products or sophisticated or inventive equipment like HIPEC, etc. All of these things are provided very efficiently in a streamlined manner from a company like Medica Bazaar, which is also contributing and improving the overall healthcare system in this country. Yeah, actually, you stole my question. Okay, I wanted to ask you on the Medica Bazaar aspect of it. Okay, while Medica Bazaar has been very successful, pardon me for my ignorance,
how much of the utilization of the technologies that are used by companies like Medica Bazaar again are being used by the government? Okay, that's very, very important. Okay, for example, Gem Portal is a good example to quote. Okay, so companies like Medica Bazaar also should be able to do business with the government, and that would facilitate Health for All much, that accelerates the things for facilitating Health for All. So what is that Medica Bazaar is doing in working with the government? So, for example, we are there on their Gem Portal also. A lot of things are sold on Gem Portal from Medica Bazaar. Gem Portal is a good initiative, but that is for the government procurement. Gem Portal is for the government procurement. Medica Bazaar, even before Gem Portal came into existence, is the country's largest portal where, a doctor or a nurse or a hospital procurement person can just come, including the government hospitals, who can come there and search on our site and look from thousands and thousands of medical items, right from a small spare part of a ventilator to, say, a CT scan or an MRI, or medicines or pharmaceutical products or consumables like sutures, whatever they want from thousands of different vendors or different products. They can search there, and they can either place an order from there, or they can send us an inquiry and we can supply it to them in a very timely manner. And it is not just the government. Any private entity, any hospital, any small clinic can do that. Earlier, the problem was the procurement person, or India typically is an owner-driven thing when it comes to nursing home. A doctor after graduation maybe sets up his own clinic or a hospital. Majority of them are like that in India. They are either busy with the patients, and they are not aware of how to find such vendors, etc. And they are only dependent on whoever comes to their door selling certain things, and then they take it from there. So here they have an advantage where they can just go on our site, search for certain things, and immediately buy it. And it has made life easy for so many people. I've got testimonials where they said that, we never could have expected to get such things so easily. It has made really our life so easy that we are able to concentrate more on caring for patients rather than worrying about how to get those things to care for the patients. Yeah. Okay. Thank you, Doctor. Thank you. So coming back to Dr. Goyal, I think this is for a general public and then in a common man. One of the largest challenges or the biggest challenges is the NCDs, okay, non-communicable diseases, okay. And the awareness about NCDs is minimal. And then even if those people who are aware or who have heard about NCDs have not been able to monitor their parameters or the health appropriately. So what is the role of technology in ensuring that there is a lot of compliance or a lot of utilization of technology by a common man on the NCD front, and how the mortality could be significantly reduced? So absolutely, before I come back to your question, I will pick up the cue what Mr. Rajpal was saying. One thing which we need to understand in general, healthcare is the technology in healthcare. Technology is not a barrier. Technology is already very advanced, and fintech, retail, all the markets are already very advanced in terms of technology. When it comes to medtech, we have to be very careful because the accuracy, the reliability, trust matters a lot, because ultimately we are talking about people. That's why healthcare, medtech is not, we are very advanced in terms of technology in general. When it comes to healthcare, we need to be very sensitive. And that is the reason when we talk about that India is large, India has large population. Can we excel in 5 to 10 years and be ahead of the world? Yes, we can. Because we have that population, we have diversity of population, we can build the ecosystem and be able to lead the world in terms of research and life sciences. But it will take a lot of effort. And I think we are not there yet.
as we were talking about HPOD as that is our first step towards how to bring physical and digital world together to be able to reach out to those ASHA workers, provide them, enable them with the simple technology, which is easy to use. Don't need a paramedic or a medical doctor to be able to assist you, and then be able to take on from the vital screenings with the digital consultation, and then bridge the gap of demand supply, because we have high demand, less supply. But if you can stagger the demand, as Mr. Rajpal was saying, that if you can put 50 to 70% of the people who only need a simple consultation can be done through telehealth, they probably are reducing the burden onto these tertiary, secondary hospital systems. And I think that's the way to go. AI, as Israel example, that can you do with the app? We can easily do with the app. App is not a problem. We already have an app. The problem is we don't have the data to be able to actually get to that kind of consultation using the statistical analysis or some kind of sophisticated artificial intelligence to be able to give you a diagnostics. AI, because even if I can give you a diagnostics, India is so large, I cannot give you right diagnostics because I don't understand your physique in general, where your environment is. Now, coming back to actually, that is tying up to what we are talking about, NCDs, non-communicable disease. 90% of our major problems, chronic problems, actually start with simple two things: hypertension and obesity. So if we can curb our stress levels and we can curb our, the obesity and overweight problem, we probably can save most of Indians to get to that, most of people to get to that chronic stage. And combined with that knowledge and education, that what is our stress level as an individual, does not matter what. If we can curb life of what age range you fall into, what demographics you are coming from, what kind of work you do, if you understand what your physical parameters look like, and you understand how your lifestyle, what kind of work you do, what your environment is, whether you are in a polluted environment, whether you are you have a lot of physical work, whether you are just sitting at home and not have don't actually get to walk, including what kind of food you eat. Because food also correlates directly to our affordability. But there is a knowledge gap between saying, well, I can afford it, I can eat whatever I want because that is a symbolism of I am healthy. But that's the mix, the knowledge gap, the awareness missing, that food and your physical activity and your environment has a large role to play into your health, if that is combined with the knowledge of what your physical parameters look like. So where Meta comes into play, very simple things, whether it's a HPOD which we introduced, whether it's a simple device which you might find it in your neighborhood, whether you go to a clinic, don't think about, in my opinion, don't think about you are healthy just because you think you are not sick. That is not a parameter of saying that I'm healthy because I'm not sick. So you should, like we do every 6 months to a year, every 2 years, take that annual health checkup seriously. And once you have done the annual health checkup, now it's easy to even get the lab test done at home, in at least the urban, semi-urban areas. Get that done, understand your simple vitals, and then combine that with your habits. And now, again, there are a lot of apps that are available, whether it's just apps to understand how food and exercise correlates to your health, or just app which gather data on everything and give you some recommendations that how to interpret that into the health scenario. I think so. If you combine those two things together, digital, physical, both technology and simple level for NCDs can play a larger role. So I repeat, information and education is the first, and in my opinion, the most important step needed to make a change in India. And we can, if not 5, maybe in 10 years, can excel and maybe able to lead the world in healthcare. And I would also say we will lead the world not because we will have the best healthcare solution. We will lead the world because we will be able to build most efficient and cheaper healthcare solution, not the best, because we cannot compete with, I don't think we can compete with 100 years of the advancement which has already happened in the Western world, but we can compete with bringing the cost to a level and provide the same quality of the care which we get outside at 100 times that cost. I completely agree with you on every single aspect that you have spoken. In fact, the awareness is very, very important. I actually wanted to ask you,
you said that knowledge is very important for people to be regularly monitored, and how these NCDs affect their life in the immediate future or in the long-term future. It's not just important that if I am well, that everything is okay. Okay, it's very important that you monitor your. So we give our car for preventive care. Okay, the car is taking us from a place A to B, but that does not mean that everything is hunky-dory there, right? So similarly, one last question on this topic that I would like to ask is, how is the technology being used to make people more knowledgeable? Okay, and awareness is created. See, NCDs could be simple diabetes, it could be hypertension, cardiovascular, the cancer, especially in the women, the cervical cancer, and the breast cancer, in the men, the prostate cancer. So these are very, very simple things. Now, how is that the technology could be additionally used to create that awareness? Well, very, very important question, right? So this is basically, I would say, the paradigm shift kind of question, and also remain the juxtapose for our existence, right? So what we have taken a stance that, our simple principle, I talk about a little bit about what we do in India. Simple principle is education, awareness, facilitation. So although you can look into as a company, we are into the business of making things available and facilitate people to take care of themselves. That's what our solution, whether it's physical and digital, both combined together, do. But our mission and the objective and the vision of the company is not about the facilitation. It's about education awareness first. So what we are trying to make sure is that can we make people aware of what they are, where they are in terms of their healthcare profile, what we call personify health for you, and then let them take a step forward. We can give you access to everything, and we give you knowledge of where you are. Whether you take a step forward or not, that is not what I am trying to do. And to be able to do that, we are trying to take different routes. So you talk about government. We are talking about government alone cannot solve the problem, because obviously they have so many other problems they have to solve. So this is only not the one. So we are targeting 3 or 4 different segments, going from employer perspective, that can you take care of your people, not just the people who are in an office. Also, we're trying to focus more on the factory workers, that manufacturing facilities, the people who can actually comes into that middle to a lower tier, and with the corporate wellness in the office, so you have a higher, middle, and lower tier, and then taking a cue from there, saying if you can capture that first employer-based people, then you can take from there to their families, right? And then we are going for government, the public service centers and the government, saying we will collaborate with you. Not about that you have to spend money on it. We'll collaborate with you. Let us run the campaigns for you with our technology platform. Then we are going to just simply pay per use basis. Let's put out there into the market the cost, driving the cost down to so low that the amount you can spend to get 1 cup of tea, can you spend that much money to get everything what we're talking about, right? So just get once a simple screening done with us. And then with that screening, we'll give you the all digital media. If you have any kind of phone, we'll send you a message based on what your screening looks like. Whether you act on it or not is not what we are trying to achieve. What we are trying to achieve is at least we let you know that, what, your weight is high. You are into the, hypertension level, or you are in the orange zone, not yet become sick, but you can take care of yourself. Just if you want to learn more, enter your food here, we'll give you more insight. If you don't want to enter your food here, we'll give you some simple advice that this is generally good habits to follow. So we're trying to make sure, as I just end this on to the same principle, education awareness is first for us, then comes the facilitation. And our main motivation is reduce the barrier, the cost barrier to so low that people can pay it from themselves, if not sponsored by government or employers. Yeah. Okay. So thanks, Dr. Goyal. So let me come back to Dr. Rajpal. Dr. Rajpal, another important aspect, especially post the pandemic, is people are
scared of visiting hospitals, or now they have also learned that I can get a health care through consultation online, etc. Okay, so telehealth plays a very, very important role in this. According to you, how effectively the telehealth is being utilized in general, and then what are the things that, personally, if you ask me, I would rather do a teleconsultation with my physician or a doctor rather than going to travel all the way to the doctor. So how effectively is it being used? And then, what are your thoughts on the telehealth aspect of the technology? So prior to COVID, I don't think teleconsultation was such in a vogue. It was there, but COVID actually enabled a lot of adaptation by the patients, because obviously in the lockdown they couldn't go anywhere. They had no other choice. But that made them realize, which the teleconsultation startups were trying to put sense into a lot of people since a long time, which COVID helped them, like demonetization helped Paytms of the world. That digital financial transaction is very easy to do and it is helpful. Similarly, COVID helped these startups a lot, and especially with the knowledge on Zoom and all such things, online meetings, it made patients accept this particular change very easily. And I know even now, after the COVID is settling in, a lot of people are using online consultations as their first level of care. Though the percentage, if you look at the entire population, is insignificant, but it's a huge step forward. Okay, and now the common phrases which I even use for my friends and colleagues is, why don't you have a teleconsultation in case you can do it while you are sitting in the office or while you're at home. You don't have to go there. A lot of people do accept it. But I think it's a change in mindset which will have to change. For this, the government will have to play a major role in making people aware that, teleconsultation has checks and balances in place. There is already a policy on telehealth consultation as to what format a doctor has to use and what records he has to maintain, etc. So that policy from the government side is already there as to what the doctors have to follow for teleconsultation. So that part is sorted out. Now the government has to play a major role in educating people, like they would educate on polio or other vaccinations, that you should use teleconsultations, but probably they are not doing it because they are first waiting for a UPI-like infrastructure. That means a lot of teleconsultation and bandwidth and enough startups, whether it is from the government side or from the private side, should be there so that when they start advertising this, it shouldn't be overwhelming for the system. That if the patients start calling, it shouldn't happen that they are not able to connect with a doctor or somebody outside sitting there, etc. Otherwise, that will discourage patients to use that system. So probably the reason why I say demonetization in the hindsight may have been announced because the government at that time must have felt, Paytms are there, PhonePe is there, and all such things is there. So in case the demonetization is announced and people can't use cash, is there a system in place for them to do digital transactions? So probably that is the reason. So I think this is a golden opportunity for startups to get into teleconsultation space if they have not already been in it, and keep on engaging with the government to tell them that they are there, and encourage the government that, okay, the bandwidth is enough for them to now widely encourage patients of all segments that they should use teleconsultation as a first level of care. And I think that'll be the best thing, because the future is that. No, you can't have millions and millions of medical colleges, or you can't have millions and millions of hospitals. Every country has its own limitation, right? At the end, it is a combination of man and the machine. So the way you may have millions and millions of machines, but you can't have millions and millions of men, right? So you can't
factory produce a doctor overnight. So you have to have a balance in place, and that is where your teleconsultation, where a doctor in any part of the place can actually give his advice to any person across the country. Absolutely, absolutely. So, Mr. Shankar, do I have time for one more question? Yes, sir. Sure. Go ahead. Please go ahead. I will give this question to either of the panelists. One of them can choose to answer this in view of the time constraints. Now, electronic health records is another very, very important aspect. Traditionally, we all know when we go to a doctor, we go empty-handed, and the doctor would not have the infrastructure to have our historical information, and we don't store our prescriptions. For example, I'm not trying to blame my mother. If I go back to my mother says, no, kahi rakh diya hai. I have put my prescription somewhere else. But it is very important that we need to have those records to go there. So technology has created this concept of electronic health records. So how would you popularize it, and how would you make it more effective for a better healthcare? One of you can choose to answer. So if I'm allowed, can I say something? Yes. So I believe the government is already on it, because I keep abreast of all the digital health initiatives which the government does. If you notice, in the financial sector, there is something called as a CAS, or a consolidated asset report, where if you have been transacting by using your PAN card, you would get a monthly report, where you will know that where is your mutual fund invested or shares invested, and what is the present value, etc. You would get a consolidated statements even when you would have bought that from multiple different share brokers or different things, right? I think the government is working on a similar thing by creating a unique health identity, which they have already started. If you open your Aadhaar app or your relevant government app or the digital health locker app, now there is a new link out there called as a unique health ID. You can actually go and create it. It has just been recently launched. I think that is, if I'm not wrong, that is what they're trying to create, is that if you go to any clinic or a hospital, if you insist that, whatever their reports or their prescription, whatever, if you're linking to that unique ID, tomorrow you can just through your app, whichever doctor you may have gone, if that ID is used, you will be able to see a consolidated health record of yours, and that is what the government is trying to see. So that tomorrow when you go to a doctor, if you just get your permission to see your past records, where you will have a system to allow the doctor to see your past records with privacy concern, he will be able to see your entire history. And it will be there forever. I think we are going in a great direction. Yeah. Excellent. I won't spend time on it. I'll just, unfortunately, Mr. Rajpal, I just beg to differ on the idea that government has taken a step forward towards something called health information exchange, not actually the electronic health record. And there's a difference between electronic health record and electronic medical record. The problem in India is the infrastructure is not enabled to finance. You gave an example of finance industry. The standard and the regulations are already existing, so you can get a consolidated history in a single format. Tell me, if you go to how many clinics have the same electronic system which they are using, so when they do send the record up to the government portal, they can be matched together. They don't even know how to record a blood pressure, simple blood pressure reading into one system versus another. And we're talking about big hospitals. And there are a very small number of big hospitals. We had a challenge in India. The millions of small clinics are still paper-based. And maximum they can do is scan those and upload it for you. Once they scan it, they become, for you it is electronic medical record. But that is useless in terms of going up to the portal and getting back to the user. It is just far-fetched. I mean, I can tell you, I'm sitting in US right now. I'm calling you from Chicago. We spent 15 years into solving this problem, and we spent $1 trillion, still not there. I'm not cynical. I'm just telling you the problem is much broader than what we think a UPI can solve or the UDI can solve. It cannot solve it. And that is where
And I'm telling you because that is the core to our solution. We built an EHR embedded into our HPod and the digital app. So when we go to a small clinic, first we do is we put them onto the EHR of our own. So more and more doctors use our HPod or the IHL solution. They all standardize now. And we are connecting to ABHA portal. So now that is our main initiative. As I mentioned, the gap is too broad. We all have to come together to solve it. Yeah. But it's still, the gap exists. Anyway, I'll stop there. Yeah, thanks for the clarification. I think, the objective is not to say that, whether it will work immediately or not, whether we have it or not, but the direction in which we need to go, the importance of having the health record is very critical. I'm sure one day we will achieve the 1.3 billion will become how many billion, I don't know. So the electronic health record should be maintained, and that's a very critical aspect for a better healthy India. And India can do it. That's what I agree with Mr. Rajpal, that India can do it. That the Indian initiative, government initiative is perfect. So India can achieve it. We couldn't achieve it in Western world. Yeah. Thank you very much. So I think, we have reached the maximum time that has been allocated to us. I sincerely appreciate Dr. Rajpal and Dr. Goyal for lively discussion. And then I think, this is 1 hour is not enough. So we need a lot of time. I think I would request Mr. Shankar and Swadeep and his team to provide us longer sessions on this topic, and then we can discuss much more at length and educate people on this one. So thank you very much. Over to you, Mr. Shankar. Thank you, Dr. Shiva. It is a wonderful session. I completely agree with you that 1 hour is not enough. But this is the first of its session, and I think we have taken a baby step. I think we'll leap forward in the coming sessions and have more of such topics and wider topics, because technology plays a very important role in healthcare. I think I completely agree with you that 1 hour is not enough, but then even then we'll try to squeeze in more time next time. Thank you very much for this wonderful session, Dr. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rajpal. Thank you, Dr. Goyal. Thank you. It was wonderful. Thank you. Thank you all. We now move on to Health Nama, a highly popular health capsule put together by my co-moderator, Kishore Malviya. The topic is women health and wellness. Over to Health Nama. नमस्कार। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में और आगे बढ़ने की होड़ में लोग अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। खासकर हमारे देश की महिलाएं स्वास्थ्य के मामले में हमेशा पीछे रहती हैं। इस बार के हेल्थ नामा में हमने महिलाओं की सेहत को फोकस किया और जानने की कोशिश की कि क्यों महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। औरों की बात तो दूर, महिलाएं खुद भी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती। क्या ये सुविधाओं की कमी का मामला है? क्या सामाजिक परंपराओं के स्वास्थ्य में बाधक बनने की घटना है, या महिलाओं में जागरूकता की कमी है? आखिर विकास की अंधी दौड़ में महिलाओं की सेहत क्यों पिछड़ जाती है? प्रस्तुत है कुछ डॉक्टरों से इस विषय पर बातचीत के अंश। क्या ये माना जाए कि डेवलपमेंट का वीमेन हेल्थ से डायरेक्ट संबंध है और नेगेटिव संबंध है? डेवलपमेंट का सर मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ नेगेटिव संबंध है। हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं। तो डेवलपमेंट जहाँ पर आ रही है उसके कारण से हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं वो अर्बन एरियाज में भी आ रहे हैं, रूरल एरियाज में भी आ रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में भी आ रहे हैं। मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट के कारण ट्राइबल एरियाज में काफ़ी सहूलियत मिल पा रही है कि आज की डेट में जो हार्ड टू रीच एरियाज थे वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज थोड़ी सी एक्सेसिबल हो गई हैं। लोग भी वहाँ पर
जो रह रहे हैं उनको मालूम है कि अगर हम लोग जाएंगे तो हमें वहाँ पर PHCs में हेल्थ सर्विसेज अवेल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, पर ये सभी जगह पर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जहाँ पर जैसे माइनिंग एरियाज हैं वहाँ पर फिर भी आप ये देखेंगे कि आज की डेट में इतने ज्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं, तो सरकार भी सोचती है कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं एरियाज में जहाँ पर आपके PHCs हैं या फिर कोई हेल्थ फैसिलिटीज हैं, माइनिंग एरियाज पास में है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होते हैं, कोल माइनिंग होती है, तो उस एक्सप्लोजन के कारण जितनी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं पानी से रिलेटेड, या फिर आपकी जमीन धंस रही है, या फिर शोर इस तरह से हो रहा है कि पेशेंट को उस तरह का आराम नहीं मिल पा रहा है। तो डेवलपमेंट के प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ नेगेटिव है। जो आदिवासी महिलाएं हैं वो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी ज्यादा जागरूक, क्या ये सही है या बाकी महिलाओं की तरह भी उनकी स्थिति है? पर मेरा एक्सपीरियंस एज अ हेल्थ पर्सनल थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, क्योंकि शायद हम लोग हमेशा दिक्कतें ही खोजते हैं, ये भी हो सकता है। पर अगर हम वैसे देखें तो हाँ जी, आमतौर पर ऑर्डिनरीली उन लोगों का जो अपना लाइफस्टाइल होता है पहले के टाइम के अगर मैं हिसाब से कंपैरिजन करूं तो वो काफी हेल्दी रहा होगा। पर आज की डेट में अर्बनाइजेशन जैसे सभी जगह को छू चुकी है और लोग भी बाहर आने लगे हैं और हर तरह का खान पान शुरू हो गया है, तो फिर वहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैंसर का रेट काफी ज्यादा हाई है। आप आदिवासी महिलाओं में जिस तरह से वहाँ पर शराब को लेकर के या फिर तंबाकू सेवन को लेकर के किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन इस तरह से नहीं पाई जाती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर, यहाँ तक कि सर्वाइकल कैंसर, उसके केसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इवन ट्राइबल गर्ल्स में, क्योंकि वहाँ पर शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हाई ट्राइबल गर्ल्स में ही पाए जाते हैं। तो ये तो कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी सेहत और औरतों से कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर होती है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि सभी के इश्यूज सेम होते हुए भी डिफरेंट है। कोविड ने महिलाओं के हेल्थ को किस तरह से प्रभावित किया है, खासकर प्रेग्नेंट और एनेमिक महिलाओं? जैसे कि अभी तक इस पे ऐसी कोई लार्ज लेवल की स्टडी तो नहीं की थी, लेकिन जब जो पहला जो लॉकडाउन था उस समय काफ़ी सर्विसेज हैम्पर्ड हुई और बहुत सारी महिलाओं को, जैसे कि उस समय अपना जो हेल्थ केयर स्टाफ था वो बाकी कोविड रिलेटेड ड्यूटीज पे था, यानी जो मार्च से मई का बीच का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें काफ़ी सर्विसेज उनकी हैम्पर हुई है। लेकिन उसका अभी तक डेटा जो रिसेंटली कितना उसके कारण इफेक्ट पाई अभी तक आया नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ हद पे उनको ANC केयर या PNC केयर उस समय मिली नहीं थी। जैसे कि हम बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे आर्टिकल्स भी आए कि एक प्रेग्नेंट वुमन 1000 किलोमीटर तक गई और बीच में उसकी डिलीवरी हो गई और उससे सर्विसेज मिले नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हमें न्यूज़ में ये चीज़ें हमें पता चली, लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट अभी तक स्टडी के रूप में अभी तक ऐसा ही उसका नहीं। मैटरनल मोर्टेलिटी एक बड़ी समस्या है हमारे देश में, इसके पीछे क्या कारण है और समाधान क्या है? जो आप जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी, हाँ, एक बहुत बड़ा एक इशू है अपने कंट्री में। और जब हम ग्लोबल डेटा और अपने कंट्री का डेटा जब कंपेयर करते हैं तो ये पाया जाता है कि 1990 से अभी तक 2017 तक जो अपने 80% मैटरनल मोर्टेलिटी में रिडक्शन हमारी कंट्री ने किया है एज कम्पेयर टू ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ पर 45% रिडक्शन हुआ। हाँ, ये काफ़ी लेकिन अभी भी अपने जो मैटरनल डेथ अपने कंट्री में होती है वो अराउंड 12% ऑफ टोटल मैटरनल डेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और अभी भी हम SDG 3 गोल अचीव करने के लिए अभी भी हम बहुत दूर है। जैसे कि अभी 2017 से 2019 के बीच का जो MMR का डेटा SRC रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, उसमें MMR अपने कंट्री का 103 है। तो अभी हमें अभी तक अपने स्टेट कंट्री में जो 7 स्टेट्स है, 4 सदर्न स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, इन्होंने ही अभी तक ये MMR SDG 3 गोल जो है 70% मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का ये अचीव किया है। और अभी जो बहुत सारे जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जो मेजर जो कॉज है उसमें डायरेक्ट ऑब्स्टेटिक कॉज जो रिस्पॉन्सिबल है, जो 2/3 ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी करता है, जिसमें कि हेमरेज है,
ब्लीडिंग, एंटीपार्टम ह्यूमरेज, पोस्टपार्टम ह्यूमरेज है, फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी है जिसमें प्रीक्लाम्शिया, इक्लाम्शिया और हेल्थ सिम्टोम रहता है। उसमें उसके अलावा और ऑब्स्टेट्रिक लेबर्स है, अनसेफ अबॉर्शन के कारण भी एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो और सीवियर एनीमिया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा कॉज है जो अपने आप मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज करता है। डॉक्टर सोनालिका, आपने उम्र की बात की, शादी की उम्र की, सरकार ने इसे अभी 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया। आपको क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा या और बढ़ाने की जरूरत? फर्क तो देखिए सर, 21 भी हम मतलब अब देखिए सर, आजकल की दो सिनेरियोज हैं। एक तरफ शादी 21 में भी हो रही है, एक तरफ शादी 35 और 30 में भी हो रही है। तो कॉम्प्लिकेशंस यंग एज में भी देखी जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर 35 एंड 40 भी देखी जा रही है। लेकिन सर एक न्यूट्रिशनल, अब हम एक मेंटल मदर हेल्थ के बारे में बात करें, वुमेन हेल्थ के बारे में बात करें, तो इट इज नेसेसरी एट एवरी एज ग्रुप सर, इवन इन द यंग एज एंड इवन इन द ओल्ड एज। तो 21 साल की शादी अगर हो गई है तो उससे ज्यादा जरूरी है सर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना। दैट इज डेफिनेटली 18 से 21 साल करना डेफिनेटली एक स्टेप है आगे उस चीज को रोकने के लिए। जो एक 18 साल की एज तो बहुत ही कम एज है सर शादी की। एंड देन फिर सोशल प्रेशर्स होते हैं बच्चा करने का, प्रेगनेंसी करने का। तो 21 पे एटलीस्ट अगर हम शादी की एज रखते हैं तो डिलीवरी के लिए हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी 22, 23, विच इज नॉट वेरी बैड। But yes, health awareness is still very important in all the females, especially at the age of 22, 23, and especially after 35 and 30s, in 30s also. तो फर्क तो पड़ेगा सर, हेल्थ अवेयरनेस हम जितनी बढ़ाएंगे उतना फर्क पड़ेगा। एक स्टडी के अनुसार देश में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इनको झेलने वाली ज्यादातर कम उम्र की महिलाएं होती हैं। क्या कोई खास वजह? हमारे यंग फीमेल्स में हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। वो इसलिए सर, एक तो सबसे पहली बात, इंडिया में शादी की जो एज है वो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जल्दी आजकल, मतलब रूरल एरियाज में स्पेशली 18 to 20 ईयर्स में कर दी जाती है। देन उसके बाद जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो विद इन अ ईयर, मतलब बच्चे न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे मैम ने बताया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट बहुत देखा गया है महिलाओं में, स्पेशली यंग एज में 20-22 ईयर्स में। तो उसमें जब हम डिलीवरी करते हैं तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन। आप अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होंगे, आपकी हेल्थ नहीं अलाउ करेगी, तो आप ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। स्पेशली एनीमिया होता है या बच्चा कमज़ोर होता है, माँ कमज़ोर होती है, माँ का शरीर नहीं झेल पाता उस डिलीवरी को, स्पेशली यंग फीमेल्स में। तो कॉम्प्लिकेशंस के कारण बहुत हैं सर। रेगुलर डॉक्टर विजिट नहीं होती हैं, रेगुलर दवाइयाँ जांचें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से डिलीवरीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। एनीमिया की, हेमोग्लोबिन की जांच बहुत ज़रूरी है, टाइम पे दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी है, जो यंग फीमेल्स या फिर रूरल एरियाज़ में ये नहीं इतना अभी भी अवेयरनेस है। तो गवर्नमेंट अपने सारे मेजर्स कर रही है, बट स्पेशली हम अभी भी हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अभी भी दवाइयाँ पूरी तरीके से नहीं खाते। आयरन, स्पेशली कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, खाने पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो सब इट लीड्स टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस मेजरली, स्पेशली फॉर द मदर एंड बेबी बोथ। हमारे देश में एनीमिया से संबंधित प्रोग्राम्स समय समय पर चलाते जा रहे हैं और अभी भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी ये कंट्रोल से बाहर क्यों है, खासकर रूरल इंडिया में? सो बेसिकली देखिए, जो अनीमिया का प्रॉब्लम है ये पिछले 50 सालों से है। प्रोग्राम्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, 1970 से अनीमिया के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और उसमें भी जो ये अनीमिया प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट बिकॉज कि सिर्फ एक कारण है जिसको हमें टैकल करना है और उससे अनीमिया का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। इतना सालों से हम अभी तक अनीमिया का प्रेवलेंस नहीं रिड्यूस कर पाए, बिकॉज अनीमिया एक मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच के थ्रू ही टैकल किया जा सकता है, बिकॉज ये इसकी मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी है। ये ना केवल सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि अगर हमने आयरन या B12 या फोलेट कम खा लिया तो उसकी वजह से हो जाएगा, ये अदर नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज की भी वजह से होता है। और हमारा प्रोग्राम इतने सालों से मेन जो फोकस कर रहा है वो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पे कर रहा है, विच हैज टू बी द स्ट्रैटेजी, जो बहुत एसेंशियल है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमें स्टेट स्पेसिफिक भी कॉजेज देखने हैं कि क्या नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज किसी स्टेट में ज्यादा तो नहीं है, ताकि एक्शंस उसके हिसाब से हो सके। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द रूरल कम्युनिटी, जो आपने बोला कि प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया इट्स नॉट जस्ट इन सर्वेज में देखा गया कि सिर्फ रूरल में ज्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। बट नो डाउट
it is high in the rural population, and there are many causes to it. So there are many factors basically, not specifically for the rural or for the urban. बहुत मल्टीपल अप्रोचेस हैं जिसको हमें टैकल करना है टू रिड्यूस द प्रेवलेंस। ये बात तो तय है कि बाकी बातों के अलावा लोगों में जागरूकता की ज़बरदस्त कमी है। सरकार के साथ साथ हेल्थ केयर कम्युनिटी को भी इसके लिए आगे आना होगा। हेल्थनामा के सारे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हील फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। नमस्कार। Welcome back. Let me remind that this show is live on Facebook and YouTube. The final session will be on hypertension and its management. Hypertension has emerged as a major lifestyle ailment, and it can lead to various complications. Once an ailment of the middle-aged and older population, today, hypertension has spread its deadly roots among the young working class population, affecting their productivity. In this session, we have with us Dr. Nupur Jain, who is associated at Felix Hospital as an internal medicine specialist. Next, we have Dr. Nisha Bhatnagar, currently the medical director of Aveya Fertility and IVF Center, New Delhi. She is an experienced obstetrician and gynecologist with over 20 plus years of experience in the discipline. She specializes in low and no drug infertility solutions that help women conceive with minimal invasiveness and with unparalleled success. Last but not the least, we have Dr. Sadiq Asam, who is currently working as consultant cardiologist with Kim's Hospital, Hyderabad. Welcome all the panelists. Somebody has got a background noise going on. I request you to just check up who has got that background noise. I would request that to be silenced. And welcome to all the panelists. For the first round of questions, I hand over the platform to Kishore Malviya. थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर शंकर। मेरा पहला सवाल डॉक्टर नुपुर जैन से है। कुछ बेसिक सवाल हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन के कारण और लक्षण क्या हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन है लेकिन उनको ही नहीं पता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हाइपरटेंशन, जैसे आपने कहा है कि कुछ लोगों को हाइपरटेंशन है और उनको पता नहीं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन थिंग जो हम देखते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन का 90% ऑफ द पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होता है। आप आएंगे हॉस्पिटल में या घर पे अपने बीपी मशीन से चेक करेंगे तभी डिटेक्ट होता है। ओनली 5% पेशेंट्स में कुछ उनको सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसीलिए रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना रेगुलरली हर साल में एक बार कम से कम बीपी चेक करें। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, तो दवा के अलावा क्या उपाय है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाइपरटेंशन भी, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है जो कि हम रोजाना अपना कैसे रहन सहन कर रहे हैं उसके कारण होता है। इसीलिए इन सबके ही कॉमन लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं। सबसे पहला है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कोशिश करें कि 30 से 35 मिनट कम से कम 5 दिन हफ्ते में हम किसी तरह का व्यायाम करें, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, कुछ गेम खेले। सबसे अच्छा वो रहता है कि गेम खेले, क्योंकि वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, ज्यादा टाइम करते हैं। हम वॉक शुरू करते हैं तो वो 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, उसके जब डॉक्टर के पास होके आएंगे उसके बाद वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहता है। उसके अलावा फल सब्जियां ज्यादा खानी है। आज की डेट में सबको जो हम जंक फूड लेबल करते हैं, पिज्जा बर्गर, उसका शौक है। तो उसमें अगर हम ध्यान रखें कि वो पिज्जा बर्गर क्यों खराब है, वो इसलिए है क्योंकि उनमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो नहीं रहता है।
सो सबसे ज्यादा हमारे पास ये दोनों चीजों का इफेक्ट होता है। एंड थर्ड इज गुड स्लीप। हम अगर 7 to 8 आवर्स हम रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें इन द फॉर्म ऑफ डूइंग योगा, मेडिटेशन, बिकॉज आजकल की डेट में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत मुश्किल है, तो हमें एक्टिवली कोशिश करना है कि हम डिस्ट्रेस कैसे करें। एक सवाल और बहुत से लोगों के मन में उठता है, और वो सवाल ये है, खास करके उनमें जिनका बीपी हाई नहीं रहता है, लो रहता है, लो में बहुत कम नहीं रहता है, लेकिन वो लो साइड में ही रहता है, तो क्या लो बीपी से भी खतरा है? सर, जो लो बीपी होता है, जो रियलिटी में लो बीपी होता है, उसमें पेशेंट को आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ना सिर्फ हॉस्पिटल में, वार्ड में आईसीयू रिक्वायर्ड होता है। उसमें हम बीपी बढ़ाने की दवाइयां देते हैं, और उनके कुछ कॉजेज रहते हैं, या तो उनको इन्फेक्शन ज्यादा होगा, या हार्ट काम नहीं कर रहा ठीक से। जो आमतौर हम सुनते हैं चलते फिरते लोग कि नहीं लो बीपी रहता है इसलिए कमजोरी है, टेक्निकली लो बीपी नहीं होता है। हमारा जो बीपी होता है उसका दो पहले रहते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, या फिर जो लेमैन समझता है ऊपर वाला और नीचे वाला। सो ऊपर वाला 90 तक भी इज नॉर्मल, उससे नीचे जब आता है तब उसको हम लो बीपी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा है उनके कॉजेज रहते हैं, बट लोकल के ही डॉक्टर पे हमें जहाँ पता नहीं होता डिग्री उनकी क्या है, क्वालिफिकेशन है या क्वैक्स है, वो वीकनेस करके पेशेंट्स आते हैं, उनको कुछ कॉज नहीं मिलता है तो वो उनको बोलेंगे लो बीपी हो गया इसलिए है, और 2 बॉटल चढ़ा देते हैं। तो लो बीपी जो रूटीन में हम सुनते हैं उसका कोई खतरा नहीं है, और वो एक्चुअल में लो बीपी नहीं होता है। अगर आपको लो बीपी है तो आपको उससे पहले काफी और लक्षण होंगे, या तो बुखार, खांसी, कुछ पेट में दर्द जिसको इन्फेक्शन की तरफ जाएगा, या फिर हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स। तो पर से जो आप लो बीपी पूछ रहे हैं उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, वो एक नॉर्मल थिंग है 90 बीपी 100 बीपी रहना। थैंक यू डॉक्टर नुपुर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा सेकंड राउंड में लौटेंगे आपके पास। हमारा अगला सवाल डॉक्टर सादिक आजम से। जी सर, डॉक्टर सादिक जी। डॉक्टर सादिक, हार्ट अटैक मोर्टेलिटी रिस्क को प्रेडिक्ट करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। ये क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, ये जो मॉडल है हार्ट अटैक रिस्क प्रेडिक्ट करने के लिए, बेसिकली ऐसे कई टूल्स आ चुके हैं प्रीवियसली भी, और ये जो अभी रिसेंटली जो बना है हार्ट अटैक प्रेडिक्शन का मॉडल, इसमें काफी इंडियन डेटा डाला गया है। इनफैक्ट वेस्टर्न डेटा के साथ देयर इज सिग्निफिकेंट मॉडल्स अवेलेबल। तो बेसिकली ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं, दे टेक योर रिस्क फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एज है, आपका स्मोकिंग स्टेटस है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका बीपी है, या आर यू डायबिटिक, आपको शुगर है, ये सब रिस्क फैक्टर्स लेते हैं, एंड उनसे एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में ये वैल्यूज एंटर होते हैं, एंड दे गिव यू अ प्रेडिक्शन कि नेक्स्ट 5 years में आपको अटैक होने का चांस ये परसेंटेज है, नेक्स्ट 10 years में आपको सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस इतना परसेंटेज है। सो बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि दीज आर वेरी फ्रीली अवेलेबल टूल्स, जो नेशनल सोसाइटीज है, इंटरनेशनल सोसाइटीज है, दे हैव मेड इट अवेलेबल टू पब्लिक, तो पीपल कैन एक्चुअली डाउनलोड देम, पुट इन देयर ओन वैल्यूज, एंड यू विल गेट योर रिस्क। आपका खुद का रिस्क आपको पता लगेगा कि अगर मैं यही जो रास्ते पे मैं अब चल रहा हूँ, मैं उसी रास्ते पे चलता रहूंगा, तो अगले 5 साल में मुझे हार्ट अटैक आने का 20% चांस है, यानी 1 in 5 people of my age next 5 years will get a heart attack. So I can be that one if I don't change my path. So अगर आप एक और चीज भी कर सकते हैं, वही टूल में आप आपका प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल और आपका आइडियल कोलेस्ट्रॉल एंटर करके देख सकते हैं कि अभी मेरे ये प्रेजेंट वैल्यूज, प्रेजेंट बीपी रीडिंग के साथ, प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल रीडिंग के साथ मेरा रिस्क 20% है। अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, अगर मेरा बीपी कंट्रोल होता है, तो मेरा रिस्क अगले 5 साल में हार्ट अटैक आने का 5% हो जाता है, यानी 15% रिडक्शन होता है सिर्फ रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने का। देखिए, हर बीमारी के कुछ अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अनमॉडिफाइबल जैसे कि अपना एज है, आपका एज बढ़ते जा रहा है, आप उसको घटा नहीं सकते, आपके जीन्स है, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, ये चीजों को आप बदल नहीं सकते, बट काफी कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि
ब्लड प्रेशर है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग यू कैन क्विट। तो ये सब चीज वी गेट, तो दिस इज हाउ दिस रिस्क मॉडल्स वर्क। तो एक चीज हमारा रिस्क बताते हैं, दूसरी चीज हमको एक दिशा भी दिखाते हैं कि भाई अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा रिस्क इतने परसेंटेज से कम भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन क्या जेनेटिक है, और अगर है तो क्या इसका प्रिवेंशन है? देखिए हाइपरटेंशन के कई कारण हैं, वन ऑफ विच इज फेमिलियल, यानी कि फैमिलीज में भी हाइपरटेंशन चलता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। बट जैसा मैडम हमारे मेरे पिछले डॉक्टर नूपुर बता रहे थे, इट इज मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज। यानी आपका ब्लड प्रेशर, जैसे मैं रिसेंटली किसी को बोल रहा था, नॉर्मली अब आप फॉर एग्जांपल एक 10-20 साल पहले की बात ले लीजिए, तो 40-50 ईयर ओल्ड में बीपी आना वाज एक्सपेक्टेड, कि अगर कोई 50 साल का इंसान आता है ओपी में, उसका बीपी 140-100 या 150-100 रहता है, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि भाई ठीक है, ये एज में 50 इयर्स ऑफ एज में बीपी आता है, विद राइट मेडिकेशन। बट जब कोई 30 साल में 40 साल में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है, तो हम जनरली उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन मानते थे कि ये जो है कोई ना कोई दूसरी वजह के कारण आ रहा है, तो इसको हम वर्कअप करके कुछ दूसरा प्रॉब्लम खोज निकालते थे जिसका इलाज होके फिर वो बीपी कंट्रोल में आता था। हैरत की बात यह है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो हम बोलते हैं, यानी कि हाइपर बीपी बिना कोई प्रेसिपिटेटिंग कारण के, बिना कोई दूसरी बीमारी के सिर्फ बीपी आना, जो एल्डरली में आता था 60-70 साल की उम्र में, वो अभी 30-40 साल की उम्र में आ रहा है। और वो इस वजह से है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है। आजकल हम ज्यादा सेडेंटरी रहते हैं, एक्सरसाइज तो दूर की बात, हम वॉकिंग भी करना पसंद नहीं करते। आपका जो है पिछले कुछ साल पहले आइडिया का एक एड आया था, वॉक द टॉक, टॉक एंड वॉक, दैट इज सो यूजफुल। आई मीन आप इतना टाइम आपके फोन पे बिताते हो, अगर आप फोन आया उठ के चलना शुरू करें तो उसी में आपका वॉकिंग निकल जाएगा दिन में। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी इज नेक्स्ट टू जीरो, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में कोविड के साथ वर्क फ्रॉम होम, एवरीबडी वाज सिटिंग ऑन देयर डेस्क, हर कोई डेस्क पे काम कर रहा है, डॉक्टर्स भी, इनफैक्ट आपका प्रोसीजर्स इतने कम हो गए कि आप पूरा टाइम बस ओपी प्रैक्टिस में चल रहा था, सुबह से शाम तक सिटिंग इन अ प्लेस। इंटेंसिव केयर वालों की बात तो टोटली अलग है, देव बीन ऑन देयर फीट कंटिन्यूअसली, अ बिग सैल्यूट टू देम, बट मेजॉरिटी ऑफ द अदर प्रैक्टिशनर्स हैव बीन ऑन देयर चेयर्स। एंड इसीलिए हाइपरटेंशन हैज गॉन अप सो मच इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट 20-30% न्यू हाइपरटेंसिव आए हैं। एंड दिस वी कैन नॉट ब्लेम ओनली ऑन आवर जीन्स। ये बोल नहीं सकते कि भाई हमारे मम्मी डैडी को बीपी था तो इसीलिए हमको बीपी आ गया। मम्मी डैडी को बीपी तो 60 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में आया होगा ना, आपको 30 साल की उम्र में आया है, तो आप ये मत बोलिए मेरे मम्मी डैडी की वजह से आपको बीपी आया है। ये आया है बिकॉज यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो अगर आपको बीपी आना है बिकॉज इट्स इन योर जीन्स, यू माइट गेट इट, बट डोंट गेट इट फास्टर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर आना है 50-60 में, हम जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, फास्ट फूड्स, इंक्रीज सॉल्ट, नो एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, उससे वही बीपी हमको 30 साल की उम्र में आ रहा है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ओनली जीन्स प्रीडिस्पोज अस, मगर वो प्रीडिस्पोजिशन के साथ भी अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी डाइट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करें, तो हम वो जेनेटिक इफेक्ट को भी डिले कर सकते हैं या टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और बहुत पूछा जाता है, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर वो मेडिकेशन पे हैं और जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं जो आप लोग बताते हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो क्या कोई ऐसा स्टेज आता है कि वो मेडिकेशन फ्री हो जाए? देखिए सर, इसमें अगेन दो तरह के मरीज होते हैं। एक वो मरीज होते हैं जो वक्त से पहले हाइपरटेंसिव बन जाते हैं, लाइक यंगर पीपल है, अब 30 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, ऐसे लोगों में बीपी आता है। तो ऐसे लोगों में जनरली इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिजीज जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी उनको ओबिसिटी रहती है, वेस्ट जो है पेट के हिस्से में ज्यादा फैट रहता है, उनको कभी कभी स्लीप एपनिया डेवलप होता है, उनका शुगर भी अनकंट्रोल हो सकता है। तो ऐसे लोगों में अगर वो ब्लड प्रेशर मेडिसिन तो लेना है बीपी कंट्रोल करने के लिए, बट अगर वो लोग बाकी के चीजों को भी कंट्रोल करें, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें, अपनी सेंट्रल ओबिसिटी को घटाएं, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर एंड शुगर दोनों चीज रिवर्स हो सकती है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन अगर कोई 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड मरीज है जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है ब्लड वेसल थिकनेस के कारण, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना इज नॉट पॉसिबल, इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड।
वो एक गाड़ी चलाने की तरह होता है। आप जब तक स्टीयरिंग पकड़ के रहोगे तो कोई टक्कर नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप टैबलेट्स छोड़ देंगे तो दैट इज लाइक ड्राइविंग विदाउट होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील। तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, या तो दिल का, या तो ब्रेन का, या आंख पे, या किडनी पे। इसको हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर एंड शुगर में यू हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आपको वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ के रखना है तो आपकी गाड़ी सही ट्रैक पे चलेगी। बट हाँ, अगर आप यंग हैं, अगर आपको वक्त से पहले बीपी आया है, तो फिर आप आपके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे, वेट लॉस करेंगे। अगर आपको स्लीप एपनिया है, आप स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट लेंगे, सीपैप लेंगे, तो कई हद तक ब्लड प्रेशर को भी हम रिवर्स कर सकते हैं इफ इट इज डायग्नोस्ड अर्ली इन अ यंग पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। सेकंड राउंड में फिर लौटेंगे हम आपके पास। डॉक्टर निशा भटनागर, ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है? जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया, हाइपरटेंशन दो तरीके से होती है। एक तो है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन, और दूसरा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मींस दिस हाइपरटेंशन डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So chronic hypertension means the patient was already hypertensive on medication and got pregnant. Gestational hypertension is the term we use when we say the patient was normal, having a normal BP before pregnancy, and during the after the first trimester, she is diagnosed with high BP, especially before 12 to 14 weeks. We say that it is gestational hypertension. तो आपने क्रोनिक हाइपरटेंशन का जिक्र किया, तो क्या क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में और खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है? अभी आपने मुझे एक सबसे पहले डॉक्टर नुपुर ने समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। The blood pressure is a very vital part of normal functioning of human body. अगर blood pressure body उसको कई लेवल पे कंपनसेट करने की कोशिश करती है, एंड ऑर्गन के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्शन में आते हैं। तो वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसको कोशिश ये करते हैं कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल बनी रहे, और बॉडी इंसान को रियलाइज ही नहीं होता कि मैं धीरे 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 हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू फील द सडन चेंजेस, बिकॉज सडन सिम्टम्स आर नॉट देयर। सो आपने कहा क्रॉनिक हाइपरटेंशन ज्यादा खतरनाक होता है। अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन आपका मेडिसिन से कंट्रोल है तो यूजुअली एक तरीके का सिस्टम सेट होता है, और ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में भी मैनेज करना आसान होता है। ज्यादा खतरा हमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से होता है, जिसमें सडनली बीपी राइज होता है और वो उसमें प्लासेंटल फंक्शंस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता और बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हम ये अगर हम प्रेगनेंसी आउटकम के टर्म्स में समझें तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन को फिर भी मैनेज करना आसान है। जेस्टेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी करने के बाद ये कंट्रोल नहीं हो पाता। ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है, बेबी की ग्रोथ कम हो जाती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन सेट इन हो जाता है। बेबी को कई बार हमें प्रीटर्म बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। ये भी कहा जाता है, क्या ये सच है कि हाइपरटेंशन से पीड़ित प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है? हाँ, यही मैंने बताया। जैसे जिसे हम एक टर्म्स कहते हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। द प्लेसेंटल फंक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, द प्लेसेंटल फंक्शन शुड इंक्रीज, एनफ ब्लड सप्लाई शुड बी देयर। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर एनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इवन बेबी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, मतलब सिर्फ ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही है, बाकी सारे ऑर्गन्स को, स्टमक, किडनी, हार्ट, सब कम होता जा रहा है। बेबी को ब्लड सप्लाई कम होता जा रहा है। सो अगर हम देखते हैं कि देयर इज अ लैग ऑफ ग्रोथ, देयर इज लेस लाइकर, एंड बेबी इज डेवलपिंग साइंस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, or at some point of time if there is a reversal of blood flow, it means instead of going the blood from mother to child, there is a reversal of blood flow developing. So in these circumstances we need to take the baby out even before 28 to 30 weeks of pregnancy. So yes, yes. तो ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, वो अपने बीपी को टिपिकल रेंज में रखने के लिए क्या करें? उन महिलाओं के लिए मेडिकेशन के अलावा क्या टिप्स हैं आपके पास? This is a very very important question.
because treating gestational hypertension doesn't come from treating during the pregnancy only. The females need to realize the importance of lifestyle and their healthy choices even before they start their puberty, even before they start the menarche. So my point is that you can't treat gestational hypertension when you got pregnant. The aim should be right to identify it right from the very beginning. Like, for example, there is a girl of 12 to 13-year-old who's obese, who's having menstrual irregularities, who's not having regular periods, who's very sedentary, not doing physical activity. These cases should be recognized as potential threat for developing gestational hypertension and chronic hypertension. So the treatment should start at that point of time. They should improve their lifestyle right from the 12 to 13 years of age. They should eat, the mothers should realize that the daughters should eat healthy. They should have at least 40 to 45 minutes of exercise daily. They should be making healthy choices, eating more of fruits, eating more of vegetables, eating less of non-veg, eating less of all those fried chickens and junk food. And at that point of time, they should be more active so that this thing doesn't develop later on. At that, once she is pregnant, once she has developed hypertension, we can't help it. We can just give medication for some time to improve the placental function. And ultimately, either we will have to take the baby out early, which leads to various problems later on, or we will have to, just keep her on high dose of medication, which sometimes are out of no use. थैंक यू डॉक्टर निशा, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर लौटेंगे हम सेकंड राउंड में. ओवर टू मिस्टर शंकर. Thank you, Kishore. Before we move on to the second session of questions, we have two short videos on wellness. I request the admin to play these two videos, and then we'll go back to the second session. Tell me exactly what is body shaming. So anything like these days, too fat, too skinny, too short, too tall, too anything. There's a sense that we are all too something and we are all not enough. And mostly it's about our body. It is about these, small things that we, conceive from the environment, social media. I just lost 10 kgs of weight and this is how I lost it. Or, especially the social media or Instagram and Instagram influencers coming up with, these perfect lives, leading to a lot of self-doubt about your own body. What are the ideal exercises for weight loss, especially since this focus is on IT crowd, IT professionals who eat more and put on a lot of weight and have no exercise. So what are the weight loss exercises for them? And also please show us some of these exercises. If we are talking about the corporate culture or our IT persons, जो हमारे regular इस time work के साथ साथ अपनी health को भी maintain करना चाहते हैं, but due to lack of time, they are unable to do that. But the thing is, they need to emphasize on what they can do. Like if you are going in a gym and if you are meeting with a person who is certified, and if you are meeting with a person who is uncertified or who is, you can say that
वेरी लेस इन एक्सपीरियंस, दोनों के क्लैरिटीज अलग हो जाते हैं। लाइक अगर आप एक अनसर्टिफाइड किसी भी ट्रेनर से मिल रहे हैं तो वो आपको सीधा बोलेगा ठीक है हम एक काम करते हैं, कल से आपकी डाइट स्टार्ट है, आपको ये सैलेड्स खाने हैं, आप रोटी छोड़ दीजिए, आप चावल कम खाइए, घी बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे वो आपके जो बाइफिकेशंस करेंगे वो कभी भी आपके साथ पहले डिस्कस नहीं करेंगे कि एक्चुअली में आपकी नीड क्या है। साइमल्टेनियसली इफ यू आर गोइंग फॉर अ रेपुटेटेड और यू कैन से दैट एजुकेटिव पर्सन, राइट, आप जाएंगे तो पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज योर रूटीन। If you are in IT, there are very types of IT. I was software engineer earlier, and just because of my passion for this career, I switched to this career, right? तो नाइट ड्यूटीज भी होती हैं, नाइट शिफ्ट्स भी करते हैं. सम ऑफ देम आर डूइंग यूएस, सम ऑफ देम डूइंग यूके, और सम ऑफ देम आर राइट नाउ डूइंग विद इंडिया कल्चर. बट द थिंग इज, कोई उठता है सुबह, कोई नहीं उठ पाता है, किसी की स्लीप ही पूरी नहीं हो रही है. हम उनको सीधा के सीधा वेट ट्रेनिंग्स पे डाल देते हैं. आप किसी भी एक अच्छे प्रोफेशनल, और अगर आप जिसको एक्सपीरियंस होगा एक अच्छा, जो इस इंडस्ट्री को अच्छे से पहचानता होगा विद साइंस, तो वो हमेशा आपके साथ बैठ के एक पूरा का पूरा सेशन होगा कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपके लिपिड्स क्या हैं, आप एक्चुअली में भी लाई कहाँ करते हो. लाइक इफ समवन इज कमिंग एंड सेइंग आई एम हेल्दी, तो मैं उसको ऐसे बिलीव नहीं करूंगा यस यू आर हेल्दी. आप अपने एक बार लिपिड्स वगैरह चेक करिए. आप पिछले 1.5 साल से ड्यू टू कोविड आप घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. अब अगर हम वर्कआउट की बात करेंगे कि अगर मुझे किसी लेमैन के लिए, यू कैन से द IT प्रोफेशनल, और एक रेगुलर 9 to 6 वाली जॉब के लिए कोई अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं और वो मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमें वेट लॉस करना है, तो व्हाट इज द गुड एक्सरसाइज फॉर यू. तो सर मैंने इतना बड़ा जिम आपके लिए रखा हुआ है, एवरी एक्सरसाइज इज फुल. ये ट्रेडमिल भी आपके लिए उतनी हेल्पफुल है जितना वो बेंच प्रेस आपके लिए यूजफुल है. बट जिस तरीके से आप किसी भी, लेट सपोज हम खाना बना रहे हैं, हर चीज का एक मेजरमेंट होता है. शायद हम अनियन इतना डालेंगे तो नमक उतना ही डालेंगे, हर चीज का एक प्रॉपर मेजरमेंट है. उसी तरीके से कार्डियो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वेट लॉस करने के लिए वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपके ऊपर सीधा सीधा वेट ट्रेनिंग के लिए जोड़ दूंगा, मैं गलत हो सकता हूँ. मैं आपको सीधा बोलूंगा कि ठीक है आप डेली आइए, 15 मिनट क्रॉस ट्रेनर, 15 मिनट ट्रेडमिल, 15 मिनट साइकिलिंग, उसके बाद थोड़ा सा आप ट्विस्टर वगैरह करिए और जाइए. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है. क्या वो सच में वेट लॉस चाहता है या शायद वो टोनिंग चाहता हो. उसको वेट लॉस समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप वेट लॉस चाहते किस लिए. आप स्लिमिंग चाहते हैं, आप टोनिंग चाहते हैं, आप अपने मसल्स को टोन करिए, आप अपने इंच लॉस करिए. तो इस तरीके से अगर हम एजुकेट करेंगे और अपने जिम के एक्चुअल रूप को दिखाएंगे तो शायद उससे बड़ी हेल्प मिलेगी. Welcome back. This show is live on Facebook and YouTube. Now we move on to the second round of questions, and my question to Dr. Nupur Jain is, since hypertension is often overlooked, would you suggest mandatory BP check for patients coming with any ailment, especially when patients meet GPs? Yes, that is precisely what needs to be done and is being done. So if you would have seen, any time we visit a hospital, they would be checking the blood pressure, the pulse rate of all patients, because 40 and above, we get a good chunk of patients jinko pata nahi hota hai. They don't know that they have hypertension. And so in this routine screening, we are able to detect them early before any damages occur. We have certain number of patients also who, when they get detected, they already have a damage when we do the workup for them initially. So that tells us that all these health visits, or a very good thing which is running nowadays, is a routine health package which is being done by patients themselves, or by the corporate culture also. They have it in as part of their package. So that is a good thing, because the patients, they visit us, all their blood parameters are there with us. When they come, we do a manual BP check there, because the electronic BP monitors which most people have at home, they're not very reliable.
which is why you would have seen earlier all hospitals were also relying on them, and now we have gone back to the traditional ones again, because there is a difference between what you check at home versus what is there in the hospital. So yes, all these checkups and this routine screening is helping screen out the patients with hypertension. What are the do's and don'ts that people who have hypertension should see? For example, we hear patients being told, don't eat pickle, don't eat papad, don't eat this, don't eat that. So what are the do's and don'ts? Okay. So like you had mentioned, we say don't eat pickle, don't eat papad. That is because these have a high concentration of salt in them. And any packaged food as compared to a home food has a higher salt content, which is why we say decrease the salt content. Don't add salt over, some people like to add salt over certain fruits or in all these chaat and all. There's a higher concentration. So that is what we need to avoid. Because if we stop salt completely, the food is not palatable anymore. And we do have a few patients who become over aggressive, and we tell them decrease the salt, and they'll come back a month later or 3 months later saying कि हम 3 महीने से उबला खाना खा रहे हैं, नमक नहीं डाल रहे, how do we sustain? So we don't want that also. We just want that the salt intake should be less, and food portions where there is extra salt, we should avoid those. Exercise is very important. 30 to 45 minutes, at least 5 times a week, we need to be physically active. That is one thing. So when we talk about that 30 to 45 minutes, that is, we want brisk walking, we want some sort of sport activity. But apart from that, certain small changes you can make, like don't take the lift when you're going to your office or to your work. Park your car a little behind and then just walk to office. So that we are walking throughout the day. We just don't want to concentrate on those 30 to 45 minutes. That is important. But what we are doing over the rest 12 hours, while not 12, rather, it's more like 16 to 20 hours when we are awake now, that is also important. So the small changes which you can make, being physically active throughout the day, those are important. Apart from that, increase the content of fruits and vegetables in your diet. Apart from that, sleep, 7 to 8 hours of sleep. It's very easy to say that, but we are seeing patients now who are just saying we'd have maybe 4 to 6 hours every day at night. So that also adds on. Stress in daily life. 90% of the patients who come to me, if I ask them, are you stressed? They'll say, stress to rehta hi hai. That's not a good thing. All our work pressures, that is there, but we need to actively try and de-stress. Because it's no longer the thing that lifestyle is not stressed. We need to actively de-stress at the end of the day. Find out hobbies which help us de-stress, do yoga, do meditation, avoid smoking as much as possible. And one more thing people don't realize is that not just actively smoking, but if you're living with somebody who's smoking, we say passive smoking, that also affects you. So all these lifestyle changes need to be made so that one, we prevent or delay the progression of hypertension, and later on, once we've had hypertension, we delay its progression. Like when you initially go, we'll start you on one medicine. If you don't make the lifestyle changes, it progressively increases. People are on 3-4 medicines for hypertension. So we can delay that itself, even if you have been diagnosed with hypertension. So ideally, how many grams of salt should a normal person take, and how many grams of salt should a hypertensive patient take? See, any person should take less than 5 grams of salt. If you actually consider that, that is very less than what we are taking in our diet. So people, if you start taking your salt intake, you'll see it will be 30, 40 grams, maybe even more if you're having all these pickles and chips and all. Dr. Noble, is it correct that when people say Indians take too much of salt? I would say not just Indians, everybody, but yes, Indians, because we have a liking to these pickles and papads and chaat. All of these have a high concentration of salt. Yeah, one small question. I know, of course, it might sound a bit silly, but whenever you go to an office and you find, especially the youngsters, you find your boss shouting and somebody who is the normal course of conversation is, oh, he's hypertensive. So does stress cause hypertension or hypertension cause stress? No, stress causes hypertension, but of course, if you're worried to have a healthy lifestyle, hypertension can also cause you stress. And now I have blood pressure. But stress is a very common
component of developing hypertension, which we see. A lot of patients which come to me, I actively ask them if they're being detected with hypertension, that is your life stress. And as I said, 90% of them say yes. So I always try, if unless the blood pressure is too high, to maybe give them a short course of something to de-stress, as well as make some changes and come back to me in 10 days. And then let's see where your BP is. And so many of them are able to get from maybe 150 to 130 again. And that really shows the effect of all this thing in our life. And if we don't control this, if we don't make reversals at this time when we are detected in a fluctuating blood pressure, then it becomes fixed and we have to take the blood pressure medicine daily. Thank you. I'll come back to you. Now I move on to Dr. Sadiq Azam. Dr. Sadiq. Welcome back. How is Thank you. How is Hyderabad? Is it still hot or has it cooled down? No, it's still hot. It will cool down probably in July, hopefully. July, when you people have that fish medicine. Yeah, the fish medicine time. Yeah. Now, Dr. Sadiq, there is an emerging trend to empower patients to support hypertension screening and diagnosis. And several studies have shown the benefit of telemonitoring, particularly when coupled with co-intervention in improving the management of hypertension. What is the scenario in India? Telemedicine has taken off, and it's for the good, because what telemedicine actually does is, if you practice it in the right way, it's a very, very powerful tool to reach out to communities that do not have ready access to healthcare. I mean, I'll give you a simple example. I mean, being a cardiologist, there are many patients who have prosthetic valves or an atrial fibrillation with rheumatic heart disease whom we put on warfarin. And we ask them to just get a simple PTINR test done and go and show their local physician. So they don't need to come down to the city because they stay 200, 300 kilometers away. And you'll be surprised at the percentage of patients who say that, they don't have access to a physician. I mean, they don't have access to a physician or even an MBBS graduate within 10 kilometers of their of where they're staying. I mean, some people even up to 100 kilometers. They say we have to go to a different town altogether to get access to healthcare. So telemedicine coming in, if practiced in the right way, will help a lot of patients, will help a lot of us to reach out to patients. The second thing is coming to screening. Yes, I think everyone has to probably today's day and age have a glucometer and have a BP apparatus in your house. It's not only for the elderly population, but even for the youngsters, maybe anybody who's crossed 30. Probably once a month, you should sit on a day when you're relaxed, check your blood pressure at rest and see how it is. You'll be surprised because blood pressure, as one of our colleagues was just saying, 90% of the time is asymptomatic. You don't know you have blood pressure until you know it's gone out of control and you start having symptoms. Headaches, neck pains, early morning headaches, pain at the back of your head, giddiness unexplained, giddiness when you get up from a sitting position happening more than once, sudden changes in your lifestyle, having more of salt. All these things should alert you that probably you need to get your pressure checked. And it's wrong to say that, I live a healthy life. I eat healthy food. I do everything right. I cannot get hypertension. That's not the case. You can still get and you will still get it if you have to get it. So screen. That has to be the mantra. We have to keep screening. But don't start treating yourself depending on your home blood pressure readings. Because many times, the machines that you do get, 90% of them are well calibrated, especially in the early times. But with COVID, we've seen a lot of mid and small scale industries come up, and we don't really. And we've also seen a lot of spurious material in the market, especially with not just with these things, a lot of things. Pulse oximeters giving pulse oximetry reading with pencils in them. We've all seen those videos on WhatsApp. So it's a reality we have to deal with. But then at the same time, we also have to look at the positive that it has made a lot of this equipment much more affordable and much more accessible to the common man. So if you find that, your blood pressure apparatus is giving you a consistently higher reading, go to your hospital, get it checked by your doctor. And if it is indeed correlating,
then you probably would need to, initially start off with lifestyle modification, salt restriction, and then move on to medications if lifestyle and drugs fail. People tend to grossly underestimate the benefit of lifestyle modification and diet on hypertension. In fact, about 10 to 20 millimeters of mercury blood pressure can be reduced by lifestyle changes and salt restriction alone. And once, if that doesn't work, then of course there are good medications available. So yes, a combination of screening and telemedicine will really help us to identify people who are so far undiagnosed, and in probably reaching out to the rural areas and even in the urban pockets where people don't want to go to the hospital, so they can just check their pressures, transmit it to their doctor, and if necessary, then go down for a visit. So we can pick up a lot of people early, and by doing that, probably we can prevent the end organ damage in form of heart attacks and strokes that present in young people. There is a small gray area when it comes to blood pressure, and there seems to be no definite recommendations regarding BP modulation in arterial ischemic stroke patients. But BP should be lowered rapidly in patients with intracerebral hemorrhage. What is the current protocol, especially with regard to AIS? I know it's a technical question, but you can put it simple for our viewers. See, the thing is, in strokes, generally, there has been a lot of debate in recent times about the targets for hypertension. There was a time when 140/90 was considered to be a good enough pressure. But today, a lot of data has come which has shown that ideal pressure is less than 120/80. So across the board. Now, coming to stroke, that is a bit of a tricky situation, because there are two types of strokes. One is when you have a clot. The second is when you have a bleed. Now, when you have a bleed, there is a vessel that is ruptured and is actively bleeding into the cranial cavity. So if you have a higher pressure head, your bleeding risk will be much more. You might continue to form a greater blood clot, more of leak occurring into the cranial cavity, which can lead on to more problems like brain herniation, etc., which can be reversible. So in a bleed, they recommend a more tighter control of pressures and probably a quicker control of pressures than you would do in an ischemic stroke. Because in an ischemic stroke, what happens is that there has been a clot. So that is the reason why there is a stroke. So there is an infarct that has occurred with a decrease in blood supply. So what they say is that in a patient who has had a stroke because of blood pressure, if he's used to pressures of 180, 190, and you rapidly bring it down to 110 or 120, that can have a detrimental effect. So especially in these ischemic strokes that occur because of clots, they advocate a slightly higher pressure head than you would in a patient who has had a bleed. Of course, it varies from patient to patient, and then the neurologist takes the final call. But that is basically the funda behind it. In a bleed, you probably want it to be lowered more than you would want in a ischemic stroke. Nupur madam can probably give a better this thing to it, because it's in her purview. But this is what we generally as cardiologists do advise. Dr. Nupur, you want to add something? No, I think Dr. Shadik has explained it very well, though he's been out of this field must have been out of this field for some time. But he's given a good enough summary that in ischemic, we don't want to lower it too much. We just lower it till 30%, because if we lower it too fast, too soon, that can precipitate another stroke for the patient. And with bleed, we are more liberal in lowering it, because we don't want the bleed to progress further. Thank you. I'll come to Dr. Nisha now. Dr. Nisha, the first report on pediatric hypertension by the National Heart, Lung and Blood Institute, published way back in 1977, declared that detection and management of hypertension in children and the precursors of hypertension in adults are the next major frontiers. The report also recommended annual BP measurement in all children above 3 years. Unfortunately, so many years later, the diagnosis of hypertension is missed in majority of the cases, and familiarity with pediatric hypertension among clinicians seems to be very poor. What are your comments?
Yeah, I agree to that. I think that again, instead of treating the problem, I think we should first address the root cause. The root cause of the problem is in, especially in pediatric hypertension, majorly, like if there is some sort of disorder or disease, we can obviously check. That will be identified much earlier because with the patients will do the test and everything. But majority of the pediatric hypertension is again related to the lifestyle disorders, the food they are eating, the availability of junk food, the lack of sports and exercise. There is the very sedentary lifestyle, the availability of Wi-Fi 24 hours, the sitting of the children in front of the TV, computers, each one. Now, earlier we had one computer. There was a time when we had one computer in family. Now, everybody has a computer of their own. Father, mother, child, the grandfather, everybody has a computer of their own. And everybody is busy with their computers or phones, the smartphones. So that is something which we need to address before even moving on to something else. So this we should go back to our roots. We should start the physical activity. We should decrease the junk food. We should increase the intake of our Indian food. It is a very well balanced diet. If we take it properly, it's a well balanced diet. There is a combination of spices. There is a combination of even pickle and all. If you take it in a very small amount, it helps you increase the metabolism. So I think we should go back to our roots, and then the problem would be identifiable easily. And you mentioned a very vital thing. You said these children are very sedentary, and this past 2.5 years of COVID, they were more sedentary and more glued towards the screen. And also there was a factor of stress because they didn't have any activities to do. So is there any study or anything to show that these children probably may have a sort of BP, hypertension in them? Is there anything to show that? So I'm sorry to say that we don't have any study as of now, but I work in infertility field. So I have a lot of young adolescent girls with polycystic coming to me. They are in the age group of 12 to 14 years, 16 years. So let me tell you one thing, that this 2.5 year, there is such a high increase in the incidence of mental disorders in these young age group females. Like all of them, they are not meeting their friends. They are glued to the screen. There is all kind of content available on the screen. And mostly I am very sad to say this, that most of the content is dealing with, how unfair the world is. Lot of politics, lot of manipulations, lot of, scheming, lot of planning going on. This is what all the serials and everything is showing. So there is a rise in mental disorders in most of the children. I recently happened to talk to my daughters. They are like 18 and 16, and I recently happened to talk to two of their friends which are going through the menstrual disorders, and I come to know that many of them are sad and depressed. They don't know. They think that, like earlier, when everything, there is a small thing, like when we were growing up, each small thing, each miracle, each movie coming on a Sunday was a source of joy to us. We were very happy. We were waiting patiently. Now at a click of finger, you have 1,000 movies waiting for you. So there is no joy. There is nothing left to achieve. So all of them have sort of fulfilled everything in their life. Google is giving them all kind of information. There is no wonder seeing the leaning minar of Pisa. There is no wonder in seeing anything. It is all available on the picture. So they don't have anything left to be discovered, so that it seems that, like, what to do in life. They all are sad and depressed. They don't know the joy of 10 people sitting around gossiping and laughing and family members enjoying the meal. So I think this is what we need to go back to. And maybe then everything else will be cured, especially hypertension. Yeah, I remember in my college days, we used to have a program called Chitrahar, which used to come early in the morning. We used to wait. And not only wait, it was mandatory that we should complete our breakfast before that so that we can all sit together and enjoy. Yes. But now you have 8,000 songs on your mobile, and so you don't know what to listen, what not to listen. Yes, they have learned. There was one dress which used to be bought at Diwali. So we used to wait for Diwali. Now there are 1,000. You go to the market, even if mummy, papa doesn't have time to go to the market, you shop online. You just place an order, it is delivered to at home. Yeah, I'll close this session with one question common to all, Dr. Nupur, Dr. Sadiq, and
Dr. Nisha, how serious is this white collar hypertension? Is it really there, or is it just the sort of things that happen this way or that way? White collar hypertension. I think it is true. And I think that I already told you that there is a lot of stress about performance. There is so much of competition. The admission marks nowadays are 100%. In SRCC, you cannot get an admission without 100%. So that is there. It exists. It is very much true. Dr. Nupur? Yes. So as ma'am has said, so I just want to clarify, you're talking about white coat hypertension? White coat, yes, white coat. White, yes. Coat. So white coat hypertension is when a patient has a high blood pressure in the doctor's office. He's scared of the doctor. Yeah. And in the home, the readings are all normal. They're fine. So this does occur. We do have a few certain percentage of people who say that ghar pe, because, and I think we are detecting this more now because of the ease of getting all these BP monitors at home. So they'll check at home. They'll say, we have been checking. It's always been fine. And here in the hospital, it's come out raised. So if a patient gives us this history, then we wait. We don't suddenly increase the BP medicine. We tell them, go back, go check. And we can either do a 24 monitoring of the blood pressure at home. We do have devices now where we can test in reality that, yes, the blood pressure is staying normal at home. And it is rising as soon as the person has a thought that he's visiting the doctor's office or when he comes here. And then it's essentially, there's the fear of a doctor may be the most reason behind it, but we don't need to check it there in the doctor's office. So we just tell them, check it at home, and we check the other blood parameters. There's end organ complication checking needs to be a little more stringent because we won't be able to detect it, the blood pressure readings here. But yes, we do have a certain percentage of people who have that. Dr. Sadiq, your viewpoint, do your patients get sudden hypertension? Yes. You? Yeah, as Madam said, white coat hypertension is a very real problem, and we do see quite a percentage of people with that. In fact, it is such a problem that most of the recent society guidelines have now said that if a patient comes to you with hypertension for the first time, before you start treatment, you look at the out-of-office BP. So it may be in the doctor's office. It may be, in fact, they say that it's not only when a doctor checks it anymore. Even when he comes to the hospital and the nurse checks the pressure, they say that, it is, even that reading might be high. So the concept of a patient coming and sitting, many patients say, "Arey, kya doctor sahab, aap aajkal BP check nahi karte, na aapke assistant check karte, ya bahar check hota." So it's not because your doctor is lazy. It's because of this actual problem of white coat hypertension, that the pressure, your pressure might be 10 to 20 millimeters higher if I check it than if it's checked out in the lobby, and it might be much lower if it's checked in your own house. So that's the reason why your doctor is not checking your blood pressure himself, and his secretary or somebody in the lobby is doing it. Not because, he doesn't want. So that it is a very real problem. And so now we are relying on something known as an out-of-office BP. So what they say is that if a patient comes to you with a new onset hypertension, it's always better before you initiate treatments to give, to start to do something known as a 24 hours ambulatory blood pressure recording. So that is basically a device that is hooked up to the patient. You can wear it inside your own dress, go to work, do your regular 24 hours activity, and the machine randomly checks your blood pressure throughout the period of 24 hours. So that gives us a lot of information about your average pressure during periods throughout the day, during periods when you're active, during periods when you're at rest, during sleep. There are people whose pressure rises as soon as they're known as risers. There are people whose pressure dips. They're called as dippers. So where it dips in the morning, dips in the evening. So based on this, we can tailor your pressure medications accordingly. And it will also help us to identify whether you're really a hypertensive or not, or it's just a white coat effect. The exact opposite to this is something known as masked hypertension. Now, the reason they say do a 24 hours ambulatory BP is because there are people in whom, in a doctor's office, the pressure is normal. The rest of the time, they have high blood pressure. So this is called masked hypertension. So the ambulatory BP helps in diagnosing that also.
So there are two sides of the same coin. That is where the role of an ambulatory pressure recording comes in. And blood pressure readings are never taken in isolation. Just one reading, you check, it comes 160/90, doesn't mean you need medications right off the bat. There's a lot of workup that goes into it. And then there are a lot of non-pharmacological methods that come in. As a lot of our speakers were focusing on stress, we are seeing so many young hypertensives who are doing well just with anxiolytics, especially post-COVID, people who have been through COVID, who have been admitted in ICUs, who have seen their near and dear ones, lost their near and dear ones due to COVID. They are having anxiety that is unparalleled compared to what was there 2 years back. And these people are benefiting so much just by a slow dose anxiolytic in the night, and then they come back with normal pressure. So there's a lot of workup that goes in with hypertension before you actually start treatment. First is diagnosis, and then is appropriate therapy. Thank you, Dr. Sadiq. I think it's a very, very tricky ailment of hypertension, whether you have it at home or in office or see a doctor or a nurse. I think everything can vary, but it's not just children who are really frightened of the doctor, but even elders can be frightened, though they don't show it up. So thank you very much. Wonderful having all of you on this particular panel, Dr. Nobu, Dr. Nisha, Dr. Sadiq. It was a wonderful session. Thank you very much. Thank you. I now hand over this to my co-moderator, Kishore Malviya. थैंक यू सर। आज के एपिसोड में इतना ही। आज ये बात तो पता चली कि केवल दवा से हाइपरटेंशन मैनेज नहीं किया जा सकता है, और ये संभव नहीं है। खान पान, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज की भी अहम भूमिका है। आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले रविवार को सुबह 8 बजे हम फिर मिलेंगे और डॉक्टर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, यानी क्या डायबिटीज अगर है और हम दवा ले रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल सकती है। तो इसके बारे में डायबिटीज रेमिशन पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, टेक केयर। थैंक यू।